अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स सीज़न 4. अगर आपको लग रहा है दैट you've tuned into the wrong podcast, that's not true. I just happen to be hosting today क्योंकि हमारे जो बहुत ख़ास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मुज़म्मिल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Thank you for having me on your show. Thank you for having me on your show. How are you feeling? I'm feeling great. Yeah. Tell us a little bit about why I'm here and why you're there. Yeah, I'm just going to do that. So, Muzammil took a break from the podcast. Season wrap hua, khatam hua. During this time, a lot has been happening in his personal life and generally, you know, in Pakistan, overall in the world as well. So, you know, when we were starting this season for Thought Behind Things, Muzammil wanted to be here as a ghost. I don't want to be here as a ghost. I don't want to die yet. Muzammil wanted to be here as a guest and a guest host. I'm so sorry. Muzammil wanted to be here as a guest and share his thoughts about all of these things, you know, अपनी life के बारे में भी and generally a lot of commentary on Pakistan and the world and everything that's happening in general as well. So the best way to do that was to have this conversation over here where people like to hear your thoughts. Yeah, I hope they do. I think they do. Okay, so Muzammil, let's get into it then. Yeah. So ये बताएं कि before we get into where you are right now and what your thoughts are, हम थोड़ा सा reflect करते हैं on the past season, past year कह लें. How do you think generally how your last season was? We'll get to specifics as well, but generally. I think it was. I think it was amazing. Not just for Thought Behind Things, but podcasting as an industry. I think 2022 was the year when we arrived, sort of. Overall, अगर मैं देखूँ तो personally हमारा podcast भी double हुआ है in terms of listenership. We got some amazing guests. We did a lot of firsts, जो कि बड़ा हमारे लिए important था और powerful था because जब आप ब्रेक करते हैं जो चीज़ पहले नहीं हुई होती तो सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट ब्रेक करने का होता है. वंस इट्स ब्रोकन तो फिर 10 और लोग भी वो कर सकते हैं एंड द इकोसिस्टम बिगिंस टू डेवलप. तो इट्स द फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट वन एंड वी आर वेरी हैप्पी के लास्ट सीजन में हमने काफ़ी सारे फर्स्ट्स किए थे. What would those firsts be like? So I mean, as a starter, जो पहली episode थी, we had the Unilever CEO there, and that was one of the first times जब corporate CEO on that level was sitting down and having a very sort of human conversation. वरना बड़े different imagery में आते रहे हैं. Very raw and personal, right? Very raw and not personal. just in like a corporate. Like a conference type के किसी panel में नहीं बैठे हुए, but rather you know like a personal उस तरीके से. And that was then followed by you know Food Panda team and वो आए थे अपने Amir Ibrahim from Jazz and just so many other people throughout the season as well. So वो एक बड़ा अच्छा break था. फिर उसके बाद we got the first time that we had academia. So we had the rector from FAST and then we had the vice chancellor of LUMS. You know, sitting on a podcast and having that conversation again for a lot of people. I was speaking to kids from LUMS and they said कि you know काफ़ी दफ़ा हम देख रहे थे we were generally very anti the current VC. He was new, he was bringing a lot of changes and when we saw the podcast तो हमें समझ आई for the first time कि actually जो evolution है वो क्यों हो रही है, thought process क्या है उसके पीछे. And so जो true to our mission कि हमने you know we need to get behind the thought behind things, वो achieve हुआ. So very happy with that. There's a major first you're forgetting. Which one? Ex-Prime Minister. Ex-Prime Minister, absolutely. Yeah, of course, I mean that was a tipping point, right? So that was huge for us and for the industry at large, and that just changed everything because उनको लाने के बाद से उससे पहले मुझे लोगों को जब मैं कॉल करता था तो मैं कहता था कि अच्छा पॉडकास्ट करनी है. वो क्या होता है? ऐसा इंटरव्यू करना है. अब ये है कि you can talk to anyone and you can tell them you're doing a podcast and they know, they understand. Yeah, because for the first time because everybody was so interested, especially in Imran Khan at that time, तो वो एक
थिंग्स ही बन गए, अच्छा इमरान खान की पॉडकास्ट आ रही है. सो अ लॉट ऑफ द पीपल लाइक उनके लिए इट वाज वेरी न्यू टर्म, बट दे बिकेम कंफर्टेबल विद इट. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक उससे एक दिन पहले शान का इंटरव्यू आया था व्हिच हैड वेरी सिमिलर कंटेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कंटेंट की बात की जाए. बट द रीजन आई थिंक व्हाई दैट पॉडकास्ट वेंट वायरल वाज अगेंस्ट द विजुअल इमेजरी, कि आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक बड़ी सॉर्ट ऑफ कैजुअल सीट के अंदर बिठा करके एक सामने कंडेंसर माइक रखा हुआ है और आपने इंटरनेट के लोगों को बिठा दिया और वो एक मुकाबला चल रहा है. आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज कि who is taking that interview? Like the digital internet first folks. Absolutely. Right? Absolutely. That is something you don't get to see. Yeah. So I think उस वजह से था. फिर business में we had a first. We had a couple of firsts. Anis Khwaja was here. But for me, I mean, the most powerful conversation of last season was the Abdurazak Dawood conversation, जहाँ पर हमने दाऊद फैमिली की पूरी हिस्ट्री को जो है आर्काइव किया essentially. Which has never happened. He's never given an interview before. I mean, he's done it before in terms of political conversations, क्योंकि वो ex-commerce minister भी थे. But कभी भी उन्होंने personal अपनी story नहीं बताई. तो वो बड़ा, I mean, that was one of the most humbling conversations I've had and one of the most exciting ones. मुझे constantly goosebumps आ रहे थे उस conversation के दौरान. तो बड़ा मज़े का वो था. So yeah, I mean, the last season was for me personally very powerful, very impactful. And yeah, there was a lot that happened. Yeah, and so personally, yeah, I was going to ask you that आपकी favorite podcast कौन सी थी? Would that be Abdurazak Dawood one? That would definitely be Abdurazak Dawood. And I think उसकी reason जो है वो ये है कि एक तो ये कि again it's a timeless conversation. So it's something जो कि he's very old and he wasn't able to. I don't know if he has a book. I think he has a book, or if he's about to write one. But in terms of modern day जो आपका audio video content है उसमें कहीं पे भी available नहीं था. तो it's a very good sort of 2 hour 1.5 hour summary. और वो कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि अब migrants to Pakistan, starting from nothing, building an empire, becoming part of the 22 richest families, losing everything, then rebuilding and creating this eventually, creating a sort of $1 billion enterprise, more than that. So I mean, that was just I would love to do more conversations like that. अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि like I'm sure and I know कि thought behind things का क्या impact है, like लोगों के ऊपर जो आपके viewers हैं और listeners हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ. But what do you think, what kind of impact, in your opinion, this podcast has, and let's talk about the last season, has had on the viewers and listeners, and also on the people who have been on the podcast? कोई feedback say, what have you understood? So let's talk about the people who've been on the podcast first, because that's a very active feedback and more focused. So in terms of मैं छोटे अगर बताऊँ, I know for a fact कि पाकिस्तान की e-commerce policy जो है जब वो लिखी गई तो उसमें एक बड़ा instrumental role था कामरान शौकत साहब का, who is a former guest on the podcast, and the government of Pakistan discovered him because of the podcast. I know कि there has been a startup जो कि हमारी podcast पे आए हैं, they have raised over 100 million rupees because of this podcast. Yes. Oh my God. I know for a fact that there are startups who have been able to find partners. कि वो एक स्टार्टअप मेरे पे आई, दूसरी स्टार्टअप मेरे पे आई, दे रियलाइज़ कि अच्छा ये वो काम कर रहे हैं जो कि हम कर रहे थे, तो हमें ये सोल्यूशन मिल सकता है, दे पार्टनर टुगेदर. सो इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप्स, उन लोगों के लिए इम्पैक्ट उस तरह से. एंड देन ऑब्वियसली ये तो एक थोड़ा नीश लेवल के ऊपर है. इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर जाहिर है कि व्हेन पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, डेफिनेटली ये तो मुझे फीडबैक मिलता है कि द अमाउंट ऑफ पीपल who reach out to startups and people, not just startups but businessmen and folks who are on the show, हमेशा मुझे कॉल करके कहते हैं कि we didn't think कि आपका इतना impact होगा. हालांकि हमारी comparatively जो viewership है वो थोड़ी सी कम है compared to a lot of other platforms, लेकिन हमारी बड़ी dedicated viewership है. हाँ, and there's generally one thing that I know about any kinds of content and ये digital site पे जो भी content निकलता है, and the people who are creating is what I've learned, because अच्छा खासा time गुजार लिया इधर,
is that you can never equate the impact and influence with the number of views, followers or likes. Absolutely. Maybe some from likes, but not from views or followers. Because you can have like 3,000 followers and have massive impact and influence on the people. And you can have 3 million followers and not have enough impact or influence. Absolutely. तो वो हाँ, like in terms of viewership शायद इतनी ज़्यादा ना हो. But वो बड़ी पावरफुल व्यूअरशिप है ना, वो एजुकेटेड व्यूअरशिप है, वो फ्यूचर लीडर्स हैं. मैं जेन्युइनली मैं ये समझता हूँ कि जो थॉट बिहाइंड थिंग का व्यूअर है वो लीडरशिप रोल में है, उस पाथवे में है आने वाले वक्त में, जो एक्टिव लिस्नर है. और इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ ना, तो मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड दैट a lot of the people, a lot of the guests who we've had in the third season, एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट ये है कि थर्ड सीजन में almost 85 to 90% of the guests that we had were in word queries. So alhamdulillah the podcast has become, or the brand had become so. By inward queries you meant कि वो खुद आए थे आपके पास कि हमने आना है. हाँ, like you no longer have to reach out to people. वो उनकी teams वगैरह कोई ना कोई जो है ना वो कहेगा कि हम interested हैं, we think it's going to be a good conversation. Then I go through them, I see कि अच्छा कौन सा ऐसी conversation मैं खुद करना चाहता हूँ, and then we were able to do that. So उस sense में एक ओवरऑल आपको नज़र आता है कि अच्छा एक ब्रांड एक्विटी डेवलप होगी. बट मोर देन दैट, अ लॉट ऑफ दीज पीपल वर एक्चुअली लिसनर्स ऑफ द पॉडकास्ट, राइट? सो दे रीच्ड आउट बिकॉज दे सेड कि ओके वी आर लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्जेशन एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट पावरफुल पीपल, and if they are able to find value, if they are able to learn from the conversations, I think that's incredible. And so yeah, I mean तो ये तो गेस्ट की साइड पे देयर इज़ दैट इम्पैक्ट. जहाँ तक कंज्यूमर्स का है, आई गेट दैट फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन माई इंस्टाग्राम एज वेल. आई थिंक जो मोस्ट कॉमन फीडबैक मुझे मिलता है, इनफैक्ट आई वेंट टू वो कराची भी जब मैं गया, आई वॉज वेरी सरप्राइज, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. मैंने 3 मीटअप्स किए थे. मैंने पहला मीटअप किया, मेरा ख्याल 4 घंटे के नोटिस पे था, और आई थॉट कौन ही आएगा, 5, 8, 10 लोग आ जाएंगे. 40-45 लोग आए. मैंने दूसरा किया, वो 12 घंटे का या शायद 18 घंटे का मैंने नोटिस दिया, उसके ऊपर 60-65 लोग आए. तीसरा वाला मैंने कहा यार अब 2 हो गए, तो तीसरे पे तो बिल्कुल ही कोई नहीं आएगा. मैं भूल भी गया था सच्ची बात है. उस मीटअप पे मैं जुनैद अकरम की स्टूडियो बैठा हुआ था, मुझे आखिर में किसी ने मैसेज किया कि सर वी आर वेटिंग, तो मुझे याद आया. तो मैं 6 बजे का टाइम था और मैं 6 बजे उधर से स्टूडियो से निकला था भागा के यार मुझे तो जाना है. और हम ना आई कांट इवन टेल यू, छोटू चाय वाला के ऊपर था, और वो पूरा का पूरा जो भरा हुआ था ना, वो सारा TBT का गेस्ट ऑडियंस था. 80-85 लोग तो मिनिमम, जो मैंने एक अंदाज़ा लगाया था. तो वो उनसे जब मेरी बात हुई, and I asked them, तो a lot of people said कि आपने वो बदल दिया, the way that we think, the way that we perceive, the way that we view things. And I think that's what I wanted. What I wanted was for people to expand their worldview, expand the way that they क्योंकि सोच एक इंसान की डिफाइन करती है कि उसने किधर जाना है. आपकी अगर सोच ही बंद होगी ना, आप तंग नज़र होंगे, तो आपका ग्राफ उसी हिसाब से प्लॉट होगा. आप आज मैं 10 चीज़ें भी सिखा सकता हूँ, मैं बैठ के कोई कोर्सेज बनाऊँ और मैं वो भी कर दूँ, जो कि मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा सर्टन एरियाज़ के अंदर. बट वो एक ऑलरेडी खुला दिमाग जो है उस कोर्स को डिफरेंटली परसीव करेगा, और एक बंद दिमाग उसको डिफरेंटली परसीव करेगा. पहला काम मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर, या मुझे लगता था, एंड आई डू बिलीव वी आर ऑन दैट पैथ नाउ, कि हमें अपने लोगों का दिमाग खोलना और हमने ग्लोबलाइज करना है उन लोगों को. जिस तरह से दुनिया के लोग सोचते हैं ना, जिस तरह से हमने उनको एक पॉजिटिव थॉट देनी है, हमने उनको ये देना है कि यार यू हैव द एबिलिटी, द पावर, द पोटेंशियल टू बी एबल टू मेक चेंज. पहली चीज़ तो ये कि यू शुड हैव द एबिलिटी और द बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन बी अ लीडर, राइट, इन वॉट एवर कैपेसिटी. जब आप ये सोचते ही नहीं है, आपने दिमाग में अपने आप को जब आपने स्लेव बना लिया, तो आप स्लेव ही रहोगे. जब आपने सोचा है कि यार नहीं आई कैन राइज टू द टॉप, दैट इज़ व्हेन यू बिगिन टू मैनिफेस्ट एंड मेक योर वे टुवर्ड्स दैट, राइट. So that's probably one of the biggest feedback that we received, and that's opened their minds. Yeah, and that's the one that I loved the most. And like वो बात है कि जब दिमाग खुलता है, तो then you start dreaming, you start believing, you start dreaming, you start achieving. And I think it's interesting, like all of these people जो आपकी podcast पे आते हैं, you're essentially connecting them, connecting these people who come on your podcast to all of these other people who have no other way of learning from these people. Yeah, absolutely. With full absolute context. मैं आपको बताता हूँ, कल मेरी फ्लाइट थी दुबई टू इस्लामाबाद, राइट, एयर ब्लू.
एंड सो मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, तो द एयर होस्टेस रिकग्नाइज मी एंड शी आस्क्ड मी टू कम टू द, आगे वाली एक सीट खाली थी तो उन्होंने कहा आप उधर आ जाएं, वहाँ पे जो है ना वो लेग स्पेस जाते हैं। Perks. मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैं बड़ा वो हुआ, मैं आगे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरा जो भाई है ना, मैं आपके पॉडकास्ट बड़े एविडली सुनती हूँ, और मेरा छोटा भाई है वो, उसको मैंने आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वाली भेजी, और अब वो जो है वो ही इज़ वेरी यंग, स्टडीइंग, और उसने जो है ना वो मुझे अब कहा है कि 100,000 उसके एवज मैं इन्वेस्ट करूँ, और अब वो इन्वेस्टमेंट में घुस रहा है। एट दिस एज चित्राल की थी वो, और चित्राल में ही उनके भाई हैं। अब आप सोचें कि यार चित्राल का लड़का जो है ना, उसके पास क्या इंसाइट थी, वो तो अभी नहीं सोच रहा था कि यार मैंने ये करना है या ये नहीं करना। मुझे जितनी खुशी हुई है सुनकर, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड देन आई हैव हर्ड दीज थिंग्स बिफोर एज वेल। देयर वाज अ वुमन आई मेट हु सेड दैट आई आपकी मैंने पॉडकास्ट देखी, उससे मुझे समझ आई कि आने वाले वक्त में क्या होने लगा है। तो मैंने पहले मैंने स्किल ढूंढना शुरू की, फिर मैंने काम ढूंढा, और मैंने अपने आप को फुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया है ओनली बिकॉज आई सॉ द पॉडकास्ट एंड दैट स्टार्टेड माई जर्नी टुवर्ड्स दिस। अदरवाइज आई वुड स्टिल बी एट होम जस्ट डूइंग नथिंग। यानी कि अब इसको किस तरह से आप ले, बट फॉर मी दीज आर प्रोफाउंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, राइट? एंड दैट इज फॉर मी इट्स व्हाट मेक्स द पॉडकास्ट वर्क, एंड इट्स सो रिवॉर्डिंग, इट्स सो रिवॉर्डिंग। या सो आई थिंक वो बात है कि जो मैं कही थी कि देन यू कैन, आप बिलीव करो तो फिर आप अचीव करते हो, लाइक ऑल दीज क्लीशे थिंग्स, बट इट्स सो ट्रू। और जो मैंने वही बात है कि यू कनेक्ट दोज पीपल टू, there's no other way to learn from these people without hearing them talk extensively about how they did. उससे आप उनकी बात सुनते हो, आपका दिमाग खुलता है, आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है, आपको समझ में आती है। अदरवाइज एवरीथिंग फील्स सो डिस्टेंट एंड डिफिकल्ट, राइट? जो सेल्फ हेल्प बुक्स का नहीं सिस्टम होता कि व्हेन इट्स क्यूरेटेड ना, जब 4 लाइनें होती हैं, आप ये करें ये करें ये करें, आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, यार उसको समझ ही नहीं आती, वो मुझे भी नहीं समझ आती। आई लर्न बेस्ट व्हेन आई speak to people and try to understand why they took the decisions that they took, and there's a lot of learning from that, because उस context में मुझे नज़र आई थी कि यार अच्छा मैं इस लाइफ में उस जगह पर हूँ, मेरी उनसे बात हुई थी, he was also in such a place, उन्होंने क्या decision लिया and how it impacted them. So it's much more contextualized, it's much more humanized, and I think ये बड़ा important है समझने का कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। ये podcast is nothing else than my journey in learning interesting, useful, valuable things from interesting, useful, valuable people. Things that I can use to make my life better. And that is recorded and shared with other people so they can be on that journey with me. Right. So it's your own journey that is being recorded, and that's like knowing you, this is you. Like you thrive on learning from people. Yeah, absolutely. Yeah. So वो I think जब तक वो है, जब तक मेरी अपनी लर्निंग है, मुझे इसी तरह समझ आ जाती है। मुझे नहीं पता होता, सच्ची बात है, बड़ी रैंडम भी हुई हैं कॉन्वर्जेशंस, मुझे नहीं पता लगता कि ये वाली वायरल होगी, ये वाली नहीं होगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट एवरी पर्सन हुज कम ऑन द पॉडकास्ट इज अ ब्रांड नेम गाय, राइट? लाइक इज नॉट द वन हुज ड्राइविंग द ऑडियंसेस. Unilever CEO has over 100,000 views, and yes, he is Unilever CEO, and it's a huge title. बट आई डेंट थिंक कि हमारी ऑडियंस इतनी इंटरेस्टेड होगी. बट अगेन वो उन साहब की कॉन्वर्जेशन ऐसी थी, मैं खुद I remember, yeah. I came out of it and I was like, wow. Yeah, I remember, yeah. And so a lot of times वो जब मुझे मज़ा तभी आता है, लाइक मुझे पता होता है कि अच्छा चलो ठीक है यार, ये कॉन्वर्जेशन मज़े की थी क्योंकि मैंने सीखा, एंड ऑटोमेटिकली वो मुझे नज़र आया था कि इवन द ऑडियंस फील्स द सेम वे. Yeah, and they learn from it. इसमें वैल्यू थी. Absolutely. एक मैं भूल गया था फर्स्ट मेंशन करना, हाफिज़ नईमुर रहमान. सो द फर्स्ट टाइम दैट, क्योंकि कराची की अगर आप देखें ना, जो कराची की मेयर के इलेक्शंस हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट डिजिटल पे ही लड़ी गई हैं. और वो स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि ही केम टू TBT and we had a very extensive conversation. I mean, one of the most, again, मज़ेदार conversations जो मैंने political side से की हैं, क्योंकि एक तो इंतहा ज़्यादा humble आदमी, but more than that उन्होंने मेरे साथ डिटेल में बैठ के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को डिकन्स्ट्रक्ट किया, उसकी डिस्कशन की, और वो जब अगेन पॉडकास्ट आई तो इट वेंट क्रेजी वायरल. एंड देन उसके बाद फिर एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया था कि देन ऑल द मेयर कैंडिडेट्स वेंट टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट पॉडकास्ट्स. एंड फॉर मी अगेन दीज मोमेंट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज आपने एक डिफाइन कर दी स्पेस कि यार ये पॉसिबल है, एंड देन देयर वर अ लॉट ऑफ अदर क्रिएटर्स हु सॉर्ट ऑफ फॉलोड दैट, एंड दे वर एबल टू क्रिएट अ डिस्कोर्स
जिससे ओवरऑल people had much better insight when they went out to vote. It wasn't just the jalsas and the जो ये बैनर्स लगे हुए हैं, बट एक्चुअल में लोगों ने चैलेंज किया. और ये तमाम कॉन्वर्सेशन मैंने काफ़ी सारी सुनी, बड़े मज़े की लोगों ने की, जिसमें हर इंसान ने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सवालात किए, चैलेंज किया, एंड देन पीपल मेड बेटर डिसीजंस, आई होप, राइट, फॉर देयर फ्यूचर. एंड सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं डेमोक्रेसी की भी बात करूँ, दिस इज व्हाट वी नीड डिस्कोर्स, वी नीड पीपल, जो कि बहुत मिसिंग रहा है, जो कि मिसिंग रहा है, एब्सोल्युटली. जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक वॉइड वैक्यूम क्रिएट किया, जो कि अब हम जाके उसको फिल कर रहे हैं, राइट, कि एक्चुअली पता तो लगे, अपार्ट फ्रॉम द कप एंड द लड़ाइयाँ एंड दिस एंड दैट, एक्चुअली पता तो लगे कि यार थॉट है क्या. मुझे इतनी सलाहियत दो एज अ लिसनर कि मैं डिसीजंस खुद बना सकूं. डोंट थ्रो इन एन एंकर देयर हु इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू टेक मी टू वन साइड और द अदर. या वो आपको या एक डिफेंसिव स्टेट में लेके आ रहे हैं, या आपको पिक अ साइड करवा रहे हैं, पूरी नुआंस के साथ, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ. आपको बस पता लग रहा है कि थॉट क्या है. अब मैं इस सीजन में आई हैव सम कंट्रोवर्शियल गेस्ट्स, आई एम श्योर. अच्छा. एंड वो जो है, आई एम गोइंग टू हैव कन्वर्सेशंस विद देम, and the public can define whether they agree or disagree with them. There will be no pushing a narrative or pushing an agenda, like absolutely. Open conversation, like if you want to have an open mind, there shall be an open conversation. Exactly. I think critical questions are important, but critical questions आप दूसरे के सामने रख देते हैं और फिर दूसरा उसको जवाब दे दे. अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं, वो भी उनका राइट है. अगर वो उनका जवाब देना चाहते हैं, वो 40 मिनट का देना चाहते हैं, वो 10 मिनट का देना चाहते हैं, उनका वो राइट है. तो उस सेंस में आई थिंक ओवरऑल TBT did well last season, but I think overall the industry did well. That made me really really happy कि we are now, जो पॉडकास्टिंग तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो ये वाला एलिमेंट है ना, जिसमें लोग एक डिस्कशन एंड डिस्कोर्स वाला जो एक एलिमेंट है, I think now we're at a point where it's matured and we're going to be able to have much better transfer of knowledge through this, hopefully. Okay, that's exciting. I hope so as well. So, abhi aapne bola कि you talked about like discourse and how the industry is getting better. This reminded me कि towards the end of the season you went to a couple of podcasts as well. आपकी वहाँ पे conversations हुई. There was a lot of virality received on those ends as well. You were trending on Twitter. A lot of things happening and taken out of context. But right. I just want to ask you कि how did you feel about that, or how did that I don't know, affect your thinking, I guess. Yeah. So let me pull you back a bit. मेरा एक मानना है कि society, और ये मैं I'll keep coming back to this, but everything happens in a sort of pendulum state, जिसमें चीज़ें मूव करती रहती हैं, फिर वो वापस आती हैं, और कभी भी एक तरफ बहुत ज़्यादा चीज़ निकल नहीं जाती. जानी भी नहीं चाहिए, I guess. जानी भी नहीं चाहिए, बट जनरली भी अगर मैं एज एन ऑब्जेक्टिव, मेरा ओपिनियन ना भी हो, मैं ऑब्जेक्टिवली भी देखूँ, दैट इज़ हाउ ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज वर्कड. कि वो एक तरफ जाएगी, फिर दूसरी तरफ जाएगी, जब ज़वाल आएगा तो उसका राइज भी आएगा, एंड सो ऑन. मैंने ओवरऑल जो सोसाइटी को देखा है पिछले 5 साल, विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, what we have seen across the world and particularly in Pakistan is that there is a constant rise in polarization. There is a constant rise in extremist views around different things. चाहे वो left हो, right हो, political हो. Pick a side, pick a label. Pick a side, pick a label, right? And right and wrong, black and white. अच्छा, क्या for a lot of us we're young, where हमारे लिए ये शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा है कि हम देख रहे हैं और वो ऐसे हो रहा है कि ओ माय गॉड, दुनिया बड़ी एक स्टैंडर्ड सी थी, एंड देन सडनली नाउ इट्स ऑल अबाउट द राइट थिंग, एंड एक जंग है, सच और झूठ के दरमियान एक जंग है, हर चीज़ एक सच और झूठ के दरमियान एक जंग है. आप जब हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो आपको ये बार बार नज़र आता है कि इसी तरीके से कॉन्स्टेंटली चीज़ें फ्लिप करती रही हैं पेंडुलम. पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद आपको एक सर्टन तरीके से मिलेगा, पाकिस्तान की अपनी एवोल्यूशन है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे. बट अगर हम दुनिया भर की देखें, आप अमेरिका में जाके देख लें, तो
कॉन्स्टेंटली आपको इस तरह नज़र आता है. क्या वजह है कि आपको लेफ्ट विंग डेमोक्रेट्स नज़र आएंगे, फिर राइट विंग रिपब्लिकन्स नज़र आएंगे, फिर लेफ्ट विंग? क्योंकि सोसाइटी इसी तरीके से फ्लिप एंड वो कर रही होती है. एंड कभी भी ऐसा नहीं होता है कंजर्वेटिव बिल्कुल ही कंजर्वेटिव वो निकल जाएंगे या फिर लिबरल आएंगे और वो दुनिया ही पूरी बदल देंगे. एंड सो इन दैट फ्लिपिंग I realized as I was looking at the entire ecosystem politically, social media के ऊपर, हर जगह के ऊपर, कि I think we're at the tail end of extremist polarized views. Okay. I think over the next 5 years there's going to be a rise of centrists, as I would like to call myself. और ये वो लोग होंगे जो कि रीजनिंग पे लेकर आएंगे लोगों को, जो कि लोगों को ये कहेंगे कि यार we are all human beings and we are all inherently damaged. Right? And so one way or the other, we have to be a bit more humane with our judgment. And we have to understand things better. Like aggression से मसलों को solve ना करो, understanding से मसलों को solve करो. एक नई किस्म की leadership emerge करेगी which will begin to unite people rather than divide people. अभी बहुत divisive politics खेली जा रही है पूरी दुनिया में. Enemies को identify करके वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम मेरी तरफ आओ वाली politics खेली जा रही है. और push किया जाता है कि constantly pick a side, otherwise you are irrelevant. और हम देखते भी हैं कि जो साइड्स लेने वाले लोग हैं उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है. Yeah, of course, because that makes it easier for people, right? It makes it easier for people today. Yeah. That's what I'm saying. एक मैं पेशेंट गोई कर रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद जो है ना, ऐसे लोग जो कि साइड्स ले रहे होंगे बहुत ज़्यादा, या बहुत ओवरली क्रिटिकल होंगे, या बहुत ज़्यादा खप वाले होंगे, जो जिसको मैं आजकल कहता हूँ खप है ये. पब्लिक तंग आ चुकी होगी इन लोगों से. पब्लिक जो लोग हैं ना, जो नौजवान हैं, जिनका नौजवान खून है, वो आज साइड्स ले रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, बट वो इवेंचुअली दे विल रियलाइज. पहली बात तो ये कि यार दुनिया में कोई सच और झूठ वाली चीज़ नहीं होती, हर चीज़ ग्रे में होती है. Everything is grey. और आहिस्ता आहिस्ता जब लोग बड़े होते हैं तो अभी तो आपके जब नए नए आते हो ना, तो आपको कुछ इनएलिएनेबल ट्रूथ्स बता दिए जाते हैं कि ये ऐसा है और देखो इससे ऐसा होगा. 2 साल 3 साल 4 साल गुजरते हैं और आपको रियलाइजेशन होती है नहीं यार, मुझे तो ज़्यादा डराया गया था, ये ऐसे तो नहीं हुआ, या वो जो मेरा दुश्मन था वो इतना बुरा भी नहीं था, या उसने वो तो नहीं किया जो मैं सोच रहा था. As long as you stay in like the black and white and the right and wrong consistently, I think you're very bogged down constantly by proving yourself right. But also there is no room for growth then. Absolutely. Because you're not willing to grow, by learning from the other side as well, or just understanding कि यार ग्रोथ किस तरह आती है जब आप होलिस्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो. जब आपने अपना दिमाग बंद ही कर दिया कि इस साइड को तो समझना ही नहीं है, और अगेन आपने एग्रेसिव अप्रोच रखनी है, तो ग्रोथ तो आपकी वहीं रुक गई ना. ग्रोथ आपकी वहीं रुक गई. देखें, सोसाइटीज इस तरह आगे जा नहीं सकती. Why are these polarized times important? Polarized times are important because they push the boundaries of all sides of thinking, right? So the liberals will go into extremes and they will push the boundaries of what is potentially possible if we change the society. The conservatives will push the boundaries and they will try to give you a perfect image of all of the great things that are currently here in our society. Or have existed for the past however many years. But ना मैं 2 ख्यालात हैं, 2 क्या 1000 ख्यालात हैं, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक ख्याल को आगे लेके जाऊँ और बाकी सबसे कहूँ कि यार या तो तुम अब कुड़ते रहो या तुम मर जाओ. ये नहीं हो सकता. You have to take everybody. ये इंसान है, इन सबको आपको आगे लेके जाना है. अब आगे आप इस तरह लेके जाओगे, आप मुशावरत से लेके जाओगे, आप मिडिल ग्राउंड से लेके जाओगे, आप you will take the best things that you have or always have had. You will let go of the things that have historically brought you down. So you will take certain values जो कि आपको liberal या progressive ideas दे रहे हैं, और आप उनमें से certain values उठा लोगे और आप अपने conservative ideals में से certain values को continue करोगे, क्योंकि वो एक institutional, वो एक historical memory है. और वो आइडियाज़ इस वजह से एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि थ्रू जनरेशंस, थ्रू हाइज एंड लोज, ह्यूमन काइंड हैज़ गिवन यू सर्टन आइडियाज़. हाँ, 100 में से शायद 20 आइडियाज़ ऐसे हों, 80 आइडियाज़ शायद आपको लेट गो करने हो. तो ये वो टाइम्स होते हैं जब आपके पास वो सारे के सारे आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं. एंड देन अगेन लाइक आई सेड, अब वो टाइम आ गया, अब रैप करने का टाइम आया है. अब टाइम आया है जब हम उन आइडियाज़, उन सारी डिस्कशन, उन सारी डिबेट्स में
मिल बैठ के आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ शायद आज से 10 साल बाद सही हो जाए. लर्निंग और अनलर्निंग करनी है बहुत सारी. लाइक मुझे ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम में जा रहे हो ना, तो व्हाट यू आर बेसिकली, जो ग्रोथ वाली बात मैंने पहले की थी, कि यू आर जो हमें हमेशा से लाइफ में मसला रहा है कि हमारे बड़े बूढ़ों ने भी चीज़ें क्वेश्चन नहीं करने दी. जो जब आप एक चीज़ को लेबल लगा देते हो या कहते हो कि यही सोचा और यही करना है, you are not opening space for questioning. When you're not opening that doors to questions, then there is no room for growth. Absolutely. Then it's like fixed, like it's a very fixed mindset versus growth mindset वाली बात है. और like ये होता भी है कि this is actually like, see, eventually it becomes an agenda, and I'll say this why क्योंकि then the reason that you take an aggressive approach or aggressive tone is out of fear, because you don't want anything to sort of change the narrative at all. You're scared कि इसको जो है वो जो हम propagate करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फियर डाल दो इस चीज़ के अंदर. हम जो प्रोपगेट करना चाह रहे हैं उसको बेसिकली अगेन वही ना, राइट एंड रॉन्ग आता है ना. तो आप नेगेटिव वो कर रहे होते हो, नेगेटिव तरीके से आप दूसरे की चीज़ को साइड करना चाह रहे होते हो कि यार देखो जरा वो तो बुरी है, वो तो ये, दोनों साइड्स यही कर रही होती हैं एट द एंड ऑफ द डे. एंड अगेन व्हाट द एक्सट्रीम साइड्स डू, आई डोंट केयर मच फॉर दैट. व्हाट आई डू केयर अबाउट इज दैट I don't have a problem with the fact that extreme sides exist, because it is a very natural way of how things evolve. Yeah, right. That has to be part of the process. That has to be part of the process. For me, objectively, मैंने थोड़ा सा पीछे जाके देखा और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये हो रहा है, और सही गलत का तो मेरा काम ही नहीं है. मैं सेंटर में हूँ तो मैं तो सही और गलत को करूँगा ही नहीं. मेरा काम अलबत्ता ये ज़रूर है टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ओवरऑल सोसाइटी किस तरफ जा रही है, कंज्यूमर किस तरफ जा रहा है. मेरा सारा स्टडी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कंज्यूमर बिहेवियर साइकोलॉजी रही है, तो मैं कंज्यूमर को तो समझना कॉन्स्टेंटली आई एम ट्राइंग टू डू दैट. और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कंज्यूमर की बस हो गई है. कंज्यूमर मेरे पास इस वजह से आता है, कंज्यूमर बाकी सारे पॉडकास्ट के पास इस वजह से आता है, बिकॉज कंज्यूमर की बस हो गई है कि वो एजेंडाज के पीछे हैं. और आज भी लोगों को लगता ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एजेंडाज अपने हिसाब से पुश कर रहे हैं. वो इस इनसिक्योरिटी में हैं कि हम उस क्राउड का हिस्सा बने, हम राइट साइड ऑफ हिस्ट्री में खड़े हों. देयर इज़ नो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, there is only one history, and that is evolving continuously. Right? And so as these people begin to change the way that they consume content and begin to get sick of being forced to take sides, they will eventually want to look up to people who are ready to open themselves up across the aisle, who are ready to be to have conversations in a more civil, educated manner. I think we are now upgrading as a society. It's a very important and very powerful time for us, for Pakistan in particular. क्योंकि जितना भी negativity and all of that on one side, मेरा opinion ये है कि हमने over the last few years we've made history. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा और ये कोट किया जाएगा आने वाले वक्त के अंदर कि हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन जिसमें अगेन नॉट टू साउंड क्लिशे बट 60% अंडर द एज ऑफ 35, 49% बिटवीन द एज ऑफ 18 to 30, द मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि हाँ, मतलब ऐसी वो कि जो कि बड़े भी हो चुके हैं बट वो इम्प्रेशनेबल एज है. और उस इम्प्रेशनेबल एज में यानी कि आधी पॉपुलेशन इस मुल्क की एक बहुत टर्मोइल वाले टाइम में बड़ी हुई है. ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि they will have this memory for the rest of their life. And when they go and find a good time, they will stick to that good time because they will never want to go back to the turmoil that they've experienced growing up. So it's very important to understand that, and because I started to understand that, I was unfortunately उस पर हुआ ये कि वो थोड़ा ट्रेंडिंग हो गए. टॉप ट्रेंड बना मैं ट्विटर के ऊपर जिंदगी में पहली दफ़ा, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग. बकेट लिस्ट Have you ever trended on Twitter? I have. Yes, now I have. I was on national news multiple times. This past couple of months and past year. So I mean, it's been fascinating, but to be very honest, I think I was just a little earlier. क्योंकि मेरा सोच ये थी कि मैं जाके अब क्योंकि हम नई एज के जो ऑडियंस है ना उसके लिए हम वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आज से पहले आपके क्रिकेटर्स होते थे, जो कि आज से पहले आपके मीडिया पर्सनालिटीज़ होती थी, सेलिब्रिटीज़ होते थे. आज का मॉडर्न डे का इन्फ्लुएंसर या आज का मॉडर्न डे का जो है ना वो बड़ा भाई जो है आपका, वो आपका यूट्यूबर है.
यू नो वो अब कंटेंट क्रिएटर है, वो बंदा है जो कि आपसे आके बड़ा आपके लेवल पे बात करता है. एंड सो आई थॉट कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिगिन टू पुट आउट दैट वैल्यू वेयर वी कैन गो आउट देयर एंड हैव कॉन्वर्जेशंस with people we agree or disagree with, but have them in a polite manner and have them in a way that again brings people together rather than divides them. Unfortunately, it wasn't taken immediately, wasn't taken as the way that मैंने आपको बताया कि आने वाले वक्त में वो होगा. But I don't have any regrets, क्योंकि again ये अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें अर्ली अडॉप्टर्स आए हैं. वो अर्ली अडॉप्टर्स वो हैं जो मेरी पॉडकास्ट सुनते हैं. वो अर्ली अडॉप्टर्स हैं जो कि मेरी उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने जब मुझे देखा और मेरे ऊपर कमेंट्री की तो उन्होंने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को. आने वाले वक्तों में आपके मैसेज भी उसी साइड पे होंगे. सो आई थिंक ज़ाहिर है जब भी एक चेंज आ रहा होता है तो इट क्रिएट्स नॉइज़, एंड दैट नॉइज़ वाज देयर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. So that was unfortunate as well, to be honest. There was a lot happening. My cousin had passed away, and उसी के साथ one after the other these things were happening. But like funeral चल रहा है और phone में ये सब फट रहा है, and it was very weird time. It was a weird time, and I think the only issue that I had with the entire thing was that I was being misunderstood continuously. It's such a bad feeling. हाँ, that's not a good feeling. कि मैं बात ही कुछ और कर रहा हूँ और मुझे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है या मुझे misconstrue किया जा रहा है. It's being thrown around in a different way. So जाहिर है कि आप एक काम कर रहे हैं, आपको उस काम पे क्रिटिसिज्म मिले, 100 बिस्मिल्लाह, उस काम में कि मैं ये सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, उस क्रिटिसिज्म को देखकर मैं सुनता हूँ, मैं अपने आप को बेहतर करता हूँ. बट एक चीज़ है जो आपने की नहीं है उस पर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है या आपको उस पर But you know how I started to look at it? I started to look at it in a way that just to make yourself feel better in times like this is to let these people know and let them feel कि यार if you are commenting on something, आपको पूरी बात ही नहीं पता और उस पर आपके कमेंट आकर कर रहे हो. Do you know how that makes you look? Yeah. Because your comment is ignorant. Like you look stupid when you go out there and talk about something without even understanding it completely. So the person who actually knows the truth will think how dumb, how stupid, because that's not even the truth, right? So like I want people to really understand this कि when they're going around commenting or saying something, शायद वो उनकी ईगो के लिए बहुत ज़बरदस्त उनको फील होता होगा, but it actually makes you look quite stupid because आपको अगेन लाइक आई सेड ना, हम ये इंटरनेट का टाइम था जब हमने 4 चीज़ें पढ़ी और हम एकदम से इमोशनल होना शुरू हो गए उसके बारे में. बट द थिंग इज दैट दीज जो क्लिक बेटी चीज़ें होती हैं या जिस तरह की चीज़ें होती हैं, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट डोंट लेट दीज थिंग्स treat you like sheep, because that's what they're doing. They're saying कि यार लोग तो बेवकूफ़ हैं, people are sheep, feed them anything in a small little package and they'll start thinking and believing it. So I want people to come out of that thing and realize and question and be like, no, I'm not that stupid. देखिए इंटरनेट की एज के अंदर आपके पास छोटी छोटी चीज़ें थी, उसके ऊपर आप इमोशनल हो जाते थे. As time went on, we have to learn to understand that आपके साथ खेला जा रहा है, ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कंटिन्यूसली बनाया जाता है. एंड इन द एज ऑफ नॉलेज, इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज, तो देन यू कांट ब्लेम एनीवन. पुराने वक्तों में आप मीडिया को ब्लेम कर सकते थे कि यार मीडिया जो है वो 4 चैनल आ रहे हैं, वो चैनल जब बोल ही रहे हैं तो मैं तो यही सुनूंगा ना. 3 अखबार हैं उसमें ही आ रहा है. आजकल के टाइम पे आपके फ़ोन के ऊपर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप हर चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, आप हर चीज़ को चेक कर सकते हैं. तो वो अगर उसको आप ना करें तो दैट्स ऑब्वियसली. एंड व्हाई शुड यू गिव दिस इंटरनेट द पावर टू treat you like sheep? So take control. So obviously, but again, देखें, like I mentioned, more and more people are beginning to understand that now. Like you said, कि we're heading towards that. मैं उनको ना 10 दफ़ा बोल दूँ कि यार आप क्या कर रहे हैं, पागल हैं, चीज़ों को समझना शुरू करें. मैं 10 दफ़ा बोल दूँ. मैंने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी चीज़ को, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा. It's a process. You cannot shame anyone to begin to start. वो कहेंगे यार तू तो इस वजह से बोल रहा है because whatever. You are defending yourself. हाँ, हर चीज़ का एक एजेंडा आ जाएगा. ये होता है एवोल्यूशनरी है. और ये एवोल्यूशनरी किस तरह से होता है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर हियरिंग इट, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो एक्चुअली ये करते हैं, वो बैठ के डिसअपॉइंट होंगे कि यार इसका मतलब है लोग तो सारे शीप हैं, वो तो शीप ही रहेंगे. मैं इससे एग्री नहीं करता. एवोल्यूशन ये कहती है कि देखें, आज अगर मेरे बारे में या किसी और के बारे में आपको कुछ बता दिया गया, आपने एक दिमाग में थॉट बना ली, आप शीप थे, आपने बना ली एक थॉट. आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप उस थॉट की बेसिस के ऊपर आपने डिफाइन किया होगा कि मुजम्मिल क्योंकि ऐसा है या ये बंदा ऐसा है तो ये तो ऐसा ही रिएक्ट करेगा. 4 साल बाद ऐसा नहीं होगा.
मैं मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ मुख्तलिफ चीज़ कर रहा हूँ, तब जाके आपके वो चीज़ें ब्रेक होना शुरू होती हैं. दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि नहीं, वेट अ मिनट. सो व्हेन आई वाज टोल्ड दैट वाज अ लाई. और हमारी अपनी सबकी एवोल्यूशन ऐसी हुई है. हम जब अर्ली डेज के अंदर हम क्लिक बेटे बहुत वी यूज्ड टू स्टम्बल अपॉन इट अ लॉट. यार अर्ली डेज के ऊपर तो आपको याद होगा छोटे छोटे होते थे, बट वो होता था ये कमेंट नहीं किया तो शैतान आपको ये करेगा. If you don't forward this email, you will die tonight. And you used to get afraid and take it seriously. और वो ये ना कि हमारी जो अम्मी अब्बू हैं और दादा दी, वो आज तक व्हाट्सएप पे इस तरह की चीज़ें वो फॉरवर्ड करते हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रिसेंटली आए ना इंटरनेट के ऊपर, तो उनका भी एक एवोल्यूशनरी कर्व है, वो भी चल रहे हैं. विद इनफ टाइम ऑन द इंटरनेट व्हेन दे हैव बीन होता ना, फूल मी वंस, पता नहीं, इट्स योर फॉल्ट, फूल मी ट्वाइस, दैट्स माय फॉल्ट वाली बात है. तो इवेंचुअली यू आर फूल्ड इनफ टाइम्स. No, but that's exactly what I'm trying to say here, that people need to like now start thinking and realizing this, that don't let people tell you certain narratives or certain agendas or certain things. Like, go out and look for the knowledge yourself, the truth yourself. Okay, Absolutely. What is real and what is not, because I feel like with AI and metaverse and all these things happening, it's going to get so much more complicated to differentiate between like the reality and what's not the reality. Absolutely. So yeah, I mean, वो तो खैर definitely वो होगा, and there's definitely an entire episode that we can do on it. हमारी आज but I'm just saying that we're like you're saying ना कि लोग समझना शुरू हो जाएंगे, but the thing is that we're going one step ahead also, right? Like लोग तो अभी तक clickbaits में ही चल रहे हैं और हम एक और advanced level पे जा रहे हैं, right? So that's what I'm saying. You're creating that. That's what I'm saying ना कि देखिए वो advanced level पे आप चले जाएं, होगा क्या? होगा ये कि आज शायद जो चीज़ आप रियलिटी समझते थे, कल आपकी कुछ भी रियलिटी नहीं होगी, एंड यू विल बिगिन टू रियलाइज दैट वेरी वेरी क्विकली. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो वो एक्सेलरेट करेगा. पीपल्स रियलाइजेशन of the fact that don't believe everything on the internet is going to accelerate. Right. So उससे acceleration ही होगी of this entire evolution. Entire evolution. And so anyway, so basically हम क्योंकि I think we're going towards a more centrist time, तो जिसकी वजह से I wanted to begin to reach out. I think I was a little early, but I will definitely continue to do that in the coming months and the coming episodes, क्योंकि I want to learn. Like I said, there will be certain people who will now begin to make sense out of what value the conservatives have to offer and what value the progressives have to offer and what value the left and the right have to offer, and then begin to make sense of a way forward. Otherwise we're just going to be stuck in our spaces and like So that's what happened. It was an interesting time. और फिर उसमें ये था कि जाहिर है कि because a lot of that was happening, तो बहुत noisy हो गया था environment मेरे लिए. And then as we ended the season late December, तो वो जो है we sort of I decided कि यार मैंने ज़रा break लेनी है और मैंने ज़रा सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं उसको किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकता हूँ. So I took the break on I think 27th of December को हमारी आखिरी एपिसोड आई थी. Took a couple of months off and now we're starting. So in this time that you took off, what did you do? What did you think? And क्या था उस ब्रेक में आपके लिए? So जाहिर है कि पहली दफ़ा क्योंकि जब मैं ये सारा कर रहा था, last year was just all over the place, right? Conversations happening on a daily. And it takes a toll on you. अगर आप एक्टिवली सुन रहे हो और एक्चुअली एक्टिवली सीख रहे हो तो आपका दिमाग में ज़्यादा जगह रहती ही नहीं है. तो as I took the break, पहला तो ये कि मैंने रेस्ट किया, सच्ची बात है, couple of weeks, but also I again zoomed out a little bit और मैंने एनालाइज़ किया कि मैं क्या कॉन्वर्जेशंस करना चाहता हूँ, किन एरियाज़ में जाना चाहता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ. और ज़्यादा मैंने एक्चुअली क्योंकि वी आर ऑल्सो इन अ वेरी weird and evolving time where things are rapidly changing very, very, very and quickly. There's a consistent, I think, sense of uncertainty all the time. And हर वक्त एक uncertainty वाली feeling आ रही होती है अंदर कि बस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा. And I'm someone जो कि because I love data, so I'm very, very big on trying to project and predict and understand कि ये मैं कर रहा हूँ और ये आने वाले वक्त में इस तरह से करेगा. तो
मेरे लिए वो और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, सच्ची बात है. एंड सो आई स्पेंट दिस टाइम ट्राइंग टू read up on a lot of what's going on globally and locally, and then to try to make sense of आने वाले वक्त में क्या होगा. Make sense of the world, yeah. Yeah, and based on the information that I gathered and the analysis, अभी भी मैं कहूँगा rudimentary है, it's going to get better over time, but जो analysis मेरा है उसके हिसाब से then I was able to make the decisions that we eventually made for season 4 and for my personal and professional life. So yeah, that's what I did. Okay, so let's talk about that then. लेकिन पहले ये बताएं कि the elephant in the room is this room. How did you change this set? It's very interesting. It has a particular vibe and feeling. आपके पीछे एक aquarium है, मेरे पीछे एक लाइट हाउस है. लाइट हाउस ही है ना? लाइट हाउस ही है. शिप है. लाइक क्या थॉट है behind this? हमारा हर सीजन के बाद स्टूडियो अपग्रेड होता है. This was the biggest upgrade up until now. It's quite beautiful, by the way. Yeah, it's very pretty. I don't know cameras में कैसा आता है, but overall भी it's very pretty. हाँ, which we went all out with this one. Normally हमारा एक स्टूडियो होता था और साइडें जो है वैसे खाली होती थी. इस बार हमने पूरा रूम डिजाइन किया हुआ है. I think वो वाला पार्ट तो आ भी नहीं रहा in the frame. ये वाला पार्ट आ रहा है. So you can see all of that. Okay. And then you can see up until over here. But with or without the cameras now, this is a complete room, right? And थॉट उसमें ये थी कि एक तो ये कि आई एम बिग ऑन एक्वाटिक लाइफ, मरीन लाइफ एंड वो सारा, बट लार्जली और जो लाइट हाउस भी है इन अ वे मैंने अपने ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि थीम मैं किस तरह से इस बार थोड़ा डिज़ाइन करूँ. द लाइट हाउस हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट थीम इन माई लाइफ फ्रॉम लॉल स्टूडियोज. उसका लोगो लाइट हाउस का था. एंड देन TBT को भी हमने फिर इवेंचुअली लाइट हाउस दिया था, which in itself is nautical in a way. So हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी जो थीम है वो मरीन एंड नॉटिकल होगी, जिसकी वजह से द ब्लू दैट यू सी, दिस इज द ओशन ब्लू दैट्स देयर. एंड देन उसकी एक लाइट हाउस और ओशन की एक मेजर थॉट प्रोसेस उसके पीछे ये था कि I've always believed कि hope is a very powerful survival mechanism, right? और जब एक समंदर में आप अगर लॉस्ट होते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और उसके अंदर जो है वो आप अगर बहुत सारे दिन के लिए आप लॉस्ट हों तो यू विल लूज द विल टू इवन फाइट टू सर्वाइव. बट द मिनट यू सी अ लाइट हाउस, दैट फीलिंग दैट यू गेट एंड दैट लाइट, द पावर ऑफ अ लाइट हाउस इज in a way हमारे लिए what we're trying to do is we're trying to give hope to people by showing them knowledge as a way to improve their lives. तो एक तो ये थॉट थी. इंटरेस्टिंग एनालॉजी. लाइक अगर मैं एक ओशन में हूँ और मैं अब बस गिव अप करके डूबने वाली हूँ और मुझे लाइट हाउस नजर आता है, तो then I will suddenly have the energy and strength in me to swim make towards it, and you will fight to survive. Even if I was literally like dying that I mean, imagine you're 500 feet from the land, you don't know the land is there and you're tired. And you've been at it for days. It's crazy. It's so sad, right? कि आप उस टाइम पे छोड़ दोगे और आप मर जाओगे और पता चला कि या तो 500 मीटर दूर तो एक लैंड था और अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डाल लेते तो आप पहुंच जाते. A lighthouse does that for you, right? It tells you कि land is right there. And so similarly ocean जो है वो एक बड़ी मजेदार एक फैक्ट है कि 90% of the world's ocean the humankind has not even touched. They don't even know what's there. हम मरीख पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ओशंस का नहीं पता. एंड दैट्स आई थिंक मॉडर्न डे ह्यूमंस एज अ होल. आई बिलीव कि वी आर वेरी एरोगेंट, कि हमें लगता है हमें सब पता है, हमने सारे आंसर्स ले लिए हैं. बार बार हमेशा वो क्रूगर्स कर्व की बात करता हूँ कि a lot of us are stuck at the mount of stupidity where we have the confidence कि बस जी हमें सब समझ आ गई है, we have the answer to everything, when in actuality we don't know anything, right? And the ocean, I feel like represents that uncertainty, that lack of that chaos, जो कि आपको ओशन में मिलता है ना, जो कि कुछ भी है, हर तरफ से जा रहा है, तूफान आया हुआ है. जिंदगी भी ऐसी है, सच्ची बात है. ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट, श्योर, but have to tone down that arrogance and have to be a bit more humble in our search for knowledge and our search for growth. So that's why the ocean is there. I know a lot of people can't see it on this wall. We'll add some clips, Jawad bhai, if you can do that. We have 3 maps
that I chose. So the first one is the geological structure of the globe in 1850, which is basically the entire world. And उसमें हमने geological structure इस वजह से उसमें choose किया था because there was a lot of interesting insight there कि 1850 में दुनिया how did people understand the world. So none of the Pakistani mountains are here. Because they were discovered effectively much later because वो accessible ही नहीं थी up until that time. So the map doesn't have that. It was basically published in Edinburgh in 1850 और उसमें फिर वो हमने जो authors हैं और ये by the way उस time के ऊपर because these were all hand drawn maps. So ये authentic जो hand drawn map है ये वो वाला How cool. इधर लगा हुआ है. तो इसके पीछे क्या thought है? We just wanted to get so एक तो we wanted to get the entire globe and have an understanding of कि 1850 की दुनिया कैसी थी और जब आप उसको देखते हैं ना पुराने वक्त के मैप्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सिखाते हैं. Yeah, actually they kind of in a way depict the level of knowledge. Yes, they tell you what's going on, right? Oh my god, how interesting. So and it's unbiased. There is nobody telling you what. So जो historical आप कोई नॉवल शॉवल पढ़ते हैं तो वो आप उस बंदे की सोच से कर रहे होते हैं. इस पे ह्यूमन नॉलेज डिपिक्ट की हुई है उस टाइम के ऊपर as it was. एंड सो एक हमारा ये मैप है. दूसरा फिर हमारा है जो कि आपने देखा होगा फ्रेंच में लिखा हुआ है ले एसी सेलोन ले मेमोir ले प्लू नुबू. इट्स एशिया अकॉर्डिंग टू द न्यूएस्ट मेमोirs. इट इज़ ऑथर्ड बाय जॉन बैप्टिस्ट एंड कॉर्नेल दूसरा मुझे नज़र नहीं आ रहा इन पेरिस इन 1690. अगेन इट्स हैंड ड्रॉन एंड आपको नज़र आ रहा होगा इसमें इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है बाउंड्रीज़ को. तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था. 1690 आई चोज बिकॉज दिस वाज द ईयर. इस पे लिखा हुआ होगा ग्रैंड मुगल. अगर आप देखें ये बेसिकली वो साल है जिसमें लिखा हुआ है जो सब कॉन्टिनेंट है ना उसके ऊपर ग्रैंड मुगल एम्पायर लिखा हुआ है. सो ये पूरा एशिया का मैप है और एक हमने ग्लोब का लिया है एक हमने एशिया का लिया है. ये एशिया का वो टाइम है जब औरंगजेब यूज्ड टू रूल द मुगल एम्पायर एंड इफ़ यू कैन सी from Persia down all the way to Myanmar, this was the largest that the Mughal Empire ever was, controlled the entirety of subcontinent, and as a matter of fact was 35% of the global GDP at the time. Oh my god. And so for me it's very interesting that the subcontinent, which today has less than 3% or 4% of the global GDP, was at a time, what, 400-500 years ago, less than 500 years ago, was 1/3 of the entire globe's GDP. So can you imagine how things changed? Yes. That's called a rise and fall. That's a rise and fall. And then subsequent, I hope the rise in the coming years as well again. And then we have a map of Hindustan. लाइजार्स विलियम होम एंड लाइजार्स डैनियल ने ये अपने हाथ से बनाया था. एडिनबरा में 1818 में पब्लिश हुआ और हिंदुस्तान इस मैप का नाम है. जिसके अंदर बड़ी मज़ेदार चीज़ें अगेन आपको नज़र आती हैं कि हिंदुस्तान उस टाइम के ऊपर 1818 में कैसा था इन द आइज़ ऑफ द ब्रिटिश एंड उसमें आपको छोटी स्टेट्स नज़र आ रही हैं. एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट आपको मैं बताता हूँ. इसमें कराची है ही नहीं. पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कि ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज ऑलमोस्ट 50 or 60% of the GDP of Pakistan is Karachi. And that city is not there because Karachi did not exist effectively as a city back in those days. इसमें आपको डेरा इस्माइल खान मिलेगा, इसमें आपको मुल्तान मिलेगा, इसमें आपको डेरा गाजी खान मिलेगा, इसमें आपको लाहौर मिलेगा. These are old cities. ये old cities हैं. अच्छा कराची भी उस टाइम पे था. It was a fisher town. But what you can begin to identify is कि जब नक्शे खींचे जाते हैं, जब स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं इलाकाओं के, जब कुछ सर्टन ग्लोबल क्या कहलाती है जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता है तो कैसे कैसे चीज़ें बदल जाती हैं. आप अगर इस सदी में चले जाए ना 19वीं सदी में और किसी से पूछें कि यार इन सारे तमाम शहरों में से पाकिस्तान इस इलाके का सबसे बड़ा शहर कौन सा बनेगा तो वो आपको बताते मुल्तान, वो आपको बताते लाहौर, वो आपको 10 चीज़ें बताते. बट देन एक लकीर खींची गई जहाँ पर आपके पास पोर्ट का एक्सेस ख़त्म हो गया मुंबई का और आपको पोर्ट की ज़रूरत पड़ी और आपने कराची के अंदर आके पना ली और कराची को आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बना दिया. राइट. एंड सो दिस वाज वेरी वेरी पावरफुल एज अ मैप बिकॉज इन द नेक्स्ट डेकेड ओवर द नेक्स्ट 10 years there are going to be certain things that we're going to talk about later and those things are going to change the way that this country functions, that this region functions, that the global economy functions. And जो आज के लोग हैं जो कि अपने दिमाग बना के बैठे हैं कि हम तो ऐसे थे तो ऐसे हैं तो ऐसे रहेंगे तो you know for good or for bad, for positive or for negative, the changing times are going to change completely, radically change the reality as we know it.
And so these maps remind us of how in the past similar things have happened. On your back there is a screen जो कि generally उसमें 3-4 different videos हैं जो हम play करना चाहते हैं. We wanted to subtle तरीके से we wanted कि हमारा जो branding है लाइट हाउस की वो लोगों तक पहुँचे. तो वो हमने वहाँ पर एक रखी हुई है. उसमें ये कुछ वीडियोस हैं ऑफ द दरिया इन द लाइट हाउस जो कि समंदर इन द लाइट हाउस जो कि डिफरेंट एपिसोड्स में चलेंगी. मेरा सबसे फेवरेट फीचर जो है वो ऑब्वियसली सबसे जो एक्सपेंसिव आइटम है इस कमरे के अंदर वो ये एक्वेरियम है, विच इज़ अ सॉल्ट वाटर एक्वेरियम. एंड इवन दो अभी ये नया नया बना है तो इसमें थोड़ी सी मछलियाँ हैं. वी आर गोइंग टू बी एडिंग सर्टन मोर फिश हेयर विद पर्टिकुलरली क्लाउन एंड द येलो टैंक्स. And we're going to be adding a lot of corals here as well. But इसको लगाने का एक मेजर मकसद जो था वो ये था कि मैं इस सेट के अंदर ना मैं कुछ I wanted to add something that would show the evolutionary nature of the world. And the beauty of this is that as the season progresses over the next 10 months, and hopefully this is going to stay even in the future seasons as well, this tank is going to undergo a lot of changes, and in a very subtle way people are going to see कि यार मछलियाँ ऐड हो रही हैं, कॉरल्स आ गए हैं, छोटे छोटे कॉरल्स आ गए हैं, वो बड़े होना शुरू हो गए हैं. कभी इसमें बीमारी आ जाएगी, कभी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं. हमारी ज़िंदगियों में भी इस तरह प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इन अ वेरी सटल वे आई वांटेड कि गेस्ट के पीछे जो है ना वो हर एपिसोड में आपको एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक सॉर्ट ऑफ लिविंग फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड हो, एक एवोल्यूशन नजर आए आपको. और आपको ग्रोथ नजर आए. बिल्कुल. There was also another aspect to this. What was that? Maybe खैर उस पे बाद में आते हैं, but हाँ. So I mean, so that's there. बाकी हाँ, I mean I love the set. What about your office, your desk? So ये desk जो है इसके साथ एक कोट हैंगर है. ये भी मेरा बड़ा पसंदीदा फीचर है क्योंकि पहले वो गेस्ट्स आते थे तो उनका कोट यहाँ पे टंगा होता था. It looked a little, वो तो हमने फिर उनके लिए वहाँ पर जो है वो कोट हैंगर डाल दिया. मुझे भी चाहिए अपने स्टूडियो में. मेरे वो भी जब से विंटर्स में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया तो it's just like people are like हम कहाँ पे yes. Yeah. And then there's a study desk over there जो कि apparently पता नहीं कौन सी लकड़ थी ये. शीशम का बना हुआ है तो बड़ा महंगा था. हाँ, शीशम इज अ वेरी लाइक हाई एंड वुड आफ्टर देयार. हाँ, शायद बीच में भी कोई और आती होगी बट देयार तो नहीं था. आई थिंक शीशम ही था. नो, शीशम इज आल्सो वेरी हाई एंड. और बट खैर ये दैट्स द सेट एंड दैट्स द थॉट बिहाइंड द न्यू सेट. Beautiful set. Thank you so much. Very proud of you. Who made the set? So we had a designer. We hired a designer. Who's called Aiz Raza, who also happens to be Hamna's brother. Yeah. And he did a stellar job with it. Like I gave him complete. मैंने उनको thoughts बताई थी जो मैंने आपको thoughts बताई हैं, and then he just came up with all of this. So yeah, props to him for doing such a great job. Yeah. Okay, so आपने बोला कि आपने अपनी ब्रेक वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी सोची, थॉट्स आई बहुत सारी. तो उनको मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ. अभी हमने सेट के पीछे जो सारी थीम थी वो समझी है, क्यों आपने नॉटिकल थीम की, उसका बैकग्राउंड क्या है. हाउ इज़ दैट रेलिवेंट टू योर नेक्स्ट सीजन? राइट, लाइक थॉट्स बहुत अच्छी हैं बट वो नेक्स्ट सीजन में कैसे उनकी रेलिवेंस होती है? व्हाट डज दैट हैव टू डू विद यू राइट नाउ, the world right now, Pakistan right now, wherever you want to start from. So let's zoom out a bit and let's talk a little bit about Pakistan, क्योंकि आजकल जो है economic crisis हमारे सर पे है और everybody is anxious about it. और मैंने पिछले दिनों एक इसके ऊपर स्टोरी भी की थी Instagram के ऊपर and people were very appreciative कि यार चलो कोई बात कर रहा है. देखें अभी आज ये मेरा ख्याल है 15 तारीख को ये एपिसोड लाइव जाएगी, तो लेट्स होप कि उस वक्त तक IMF की एक डील हो चुकी हो, जो कि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक डील नहीं हुई. एंड द एंटायर पाकिस्तान इज़ राइट नाउ डिबेटिंग अबाउट कि IMF की डील हो जाए तो हम सेफ हो जाएंगे और IMF की डील नहीं हुई तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे. द फैक्ट इज़ कि जब मैंने थ्रू आउट द सीजन्स, पास्ट फ्यू सीजन्स, we've had these discussions about it with different business leaders and economists and policy makers, and एक चीज़ बड़ी क्लियरली सामने आई है और वो ये सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, द वे दैट वो जो स्ट्रक्चरली चलती है वो स्ट्रक्चर ही ख़राब है. और उसमें अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर हम एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि
बाहर से इंपोर्ट करती है और अपने लोगों को बेचती है। हमारे लोगों को सिर्फ ये आता है, हमारे लोगों को आता है कि हम जो है ना वो चीज़ों को ब्रांड किस तरह करें, उनको मार्केट किस तरह से करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करें, ये भी हम कर लेते हैं। हमें चीज़ें बनानी आती ही नहीं है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक हम ये नहीं कि वो तबका ऐसा, भाई हमारा हर बंदा ऐसा है। हमारा बंदा सिर्फ सर्विसेज करना जानता है, वो कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग उसने ना कभी सीखी, ना वो इवन सीखना चाहता है। फॉर सम रीज़न यू नो दे आर रियली बैड एट इट, विच इज़ वाई यू नो आप प्लॉटें बेच दोगे, आप दुनिया की हर चीज़ बेच दोगे, आपको चीज़ बेचनी हाँ बिकवानी हो ना तो पाकिस्तानी बेहतरीन है उस काम के लिए। बट एक्चुअल में कुछ बनाना, कुछ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों का बहुत सारे उसके वजूहात हैं, बट द वे द सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड फॉर मोस्ट पार्ट वाज लाइक दैट। मैं आता हूँ उसके ऊपर भी थोड़ा सा। एंड जब आपकी सोसाइटी इम्पोर्ट लेड होती है तो जाहिर है आपका इम्पोर्ट बिल ज़्यादा होता है, आपको कुछ चीज़ें चाहिए। आज आप जो हैं वो आप दुनिया बड़ी हो गई है, आपके पास इंस्टाग्राम आ गया, आपको आ गया कि फैंसी चीज़ें होती क्या हैं, तो आप फैंसी चीज़ें जो है ना एवरीबडी वांट्स अ फैंसी थिंग, बट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग, देयर इज नो प्रोडक्टिविटी जिसके एवज आप उन फैंसी चीज़ों को लोगे, राइट? तो जिसके ऊपर जो ये बड़ी क्लिशे बात हो चुकी है अब के आपका करंट अकाउंट डिफिसिट ज़्यादा है, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल आपको अपना करंट अकाउंट डिफिसिट को कर्जा लेके पूरा करना होता है। अब हिस्टोरिकली हम एक बूम बस्ट साइकिल में जाते रहे हैं जिसमें हम जो है वो कर्जा लेते हैं और कर्जा लेके हम जो है जी अपने लोगों के शौक़ पूरे करते हैं और उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जैसे ही करने लगते हैं तो हमें कोई आके बचा लेता है, फिर हम और कर्जा लेते हैं बेसिकली। हम और कर्जा लेते हैं, लेकिन कर्जे की भी एक लिमिट होती है ना। तो जब भी कर्जे की लिमिट रीच होने वाली होती है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1960s में 50s के एंड में रीच होने लगी थी, तो 60s में अयूब खान साहब आए और हमें ना अमेरिका की तरफ से इकोनॉमिक एड मिलना शुरू हो गया। अच्छा, वो एक्चुअली पहली दफ़ा हमें अच्छी एड मिली थी, जो कि यूरोपियन मार्शल प्लान की तरह की एड थी, जिसमें आपका डैम्स बन रहे थे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, और हमने उस एड को लेके हमने अनफॉर्चुनेटली जंग हो गई उस टाइम के ऊपर, एंड द अमेरिकन गॉट अपसेट एंड दे सेड कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप गिविंग यू इकोनॉमिक एड। और जो 60s का एक बड़ा अच्छा टाइम था जिसमें हमें लगा कि यार हम तो बड़े फिट हैं, वो एक्चुअली आपको डॉलर्स आ रहे थे बाहर से, और उन डॉलर्स की वजह से आपने जो गिनी चुनी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपने करने थे वो आपने कर लिए। उसके बाद 70s में आप फिर उसी में चले गए, वो सोशलिस्ट स्टाइल के यार हर चीज़ को हम सब्सिडाइज करेंगे, प्राइवेट एंटरप्राइज़ को आपने तबाह कर दिया और आपने कहा जी गवर्नमेंट आके जो है ना सस्ता अनाज, सस्ता ये सस्ता वो, सब के लिए सस्ती चीज़ें आएंगी। It doesn't work. The world doesn't work like that. And so by the end of the 70s, you were going bankrupt again. 80s के अंदर एक और मिलिट्री डिक्टेटर आए और उन्होंने आके फिर से अमेरिकन के साथ एक जंग का पार्टिसिपेट किया, and you got a ton of military aid this time around. आप 80s में जाएं, फिर से आपकी GDP ग्रोथ रेट हाई है, आपका टेंशन कोई नहीं है, आपका बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपको डॉलर पे डॉलर आ रहा था, ठीक है, और आप उस डॉलर से अगेन अपनी आप लग्जरीज फंड कर रहे थे, आपको कोई टेंशन ही नहीं थी। आप उस टाइम पे भी कुछ कर लेते, उस टाइम पे भी आप थोड़े डैम्स बना लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते, इंडस्ट्रियलाइज करते अपने आप को, लेकिन आपने नहीं किया। आप देखें जैसी वो एड ख़त्म हुई इन द लेट 80s, 90s आए, फिर एग्जैक्टली वही पॉलिटिकल टर्मोइल नॉट विद स्टैंडिंग, एग्जैक्टली सेम चीज़ कि आपका बाय 1999, 1998 एंड 1999 आप बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं जी देखिए उस वक्त इसहाक डार साहब थे, उन्होंने गलत पॉलिसीज़ की, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। यार होगी पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स मोर ऑफन देन नॉट इज driven by public sentiment. लोग कहते हैं ना ये आखिरी साल में आके बुरे फैसले कर लेता है क्योंकि उसको तो वोट चाहिए, तो भाई वो डेमोक्रेट है, वो वोट्स के लिए आता है। दैट मीन्स द वोटर डजंट डिमांड बेटर थिंग्स. That means that if the Democrat is saying कि यार वो वोट्स के लिए ये कर रहा है तो वो सही कर रहा है. That means that he is actually coming to power through the votes. Yeah, so you see what people want and expect. So if the people don't want better things and if they are compelling the politician to take wrong decisions, then go and educate the people. Then there is something wrong with your media. There is something wrong with your advocacy. There is something wrong with your activists. But it is the people by and large who have expected the wrong things of the government. Right. जब आपके politicians और leaders को नजर आएगा कि लोगों को तो ये चाहिए तो वो देंगे. Exactly. क्योंकि उनको तो वोट मिलता है उससे. Exactly. So late 90s के अंदर आपके पास फिर से वही था, आप bankrupt होने लगे थे. 2000s के अंदर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने आके जी अमेरिकन एक और जंग में हिस्सा लिया, आपको तो उनके अमेरिकन पैसा मिला, आपके 2000s बहुत अच्छे थे, बैंक्स चलो उसमें कम से कम ये हो गया, मार्केट्स ओपन अप हो गई कि यार बैंक्स खुल गए, मीडिया खुल गया, ये हो गया वो गया, वो एक चीज़ वो अच्छी कर गए. लेकिन इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया, इकोनॉमी को आपने उस तरह से नहीं किया, आपने उसमें बड़े सारे मिस्टेक्स की. CNG खोल दी, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स थी, आप गैस को इस्तेमाल करते फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप उसको यूज़ करते फॉर सस्ती बिजली और सस्ती एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज़.
आपने जाके लोगों की ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगा दिया, गाड़ियों में लगा दिया ना, याशी में लगा, कौम की याशी में लगा दिया आपने। और CNG भर भर आपने पूरा का पूरा गैस आया कि आज आपको जो लोकल गैस है वो $2 की होती है, जो कि 2027 में ख़त्म हो जाएगी, और इंपोर्टेड गैस आपको $20 की पड़ती है, जो कि $20 की तो अभी पिछले दिनों जब सर्दियाँ चल रही थी तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई थी। सो यू वेस्टेड योर इंडिजिनस रिसोर्सेज फॉर द लग्जरी ऑफ योर पीपल। लग्जरी, राइट। मैं मैकडॉनल्ड्स जाने के लिए मैं CNG भरवा रहा हूँ गाड़ी के अंदर। ये होना चाहिए या मुझे जो है वो मेरी फैक्ट्री को CNG मिलनी चाहिए ताकि वो सस्ती एनर्जी यूज़ करके सस्ता माल बनाए, ताकि वो सस्ता माल जो है वो एक्सपोर्ट करे और कंपेटिटिव हो वर्सेस द अदर कंट्रीज। सो ये हुआ। फिर 2000 जब आए तो उसके बाद फिर अगेन हम बैंक्रप्सी की तरफ थे, फिर हम IMF इन एंड आउट, हर गवर्नमेंट आई, IMF जो लास्ट गवर्नमेंट थी PMLN की, उस टाइम के ऊपर हमें एक अपसाइड हमारी ये थी कि हमारे पास CPEC की मद में बहुत सारा पैसा वहाँ से आया। उसमें जो एक मेजर अगेन हमने गलती की कि जी हमने डॉलर को कंट्रोल रखा और हम कंजम्पशन बचा रहे थे ना, हमारा एक्सपोर्ट अनकम्पेटिटिव हो रहा था, हम डॉलर को कंट्रोल करके जो है ना सस्ती गाड़ियाँ, सस्ते मोबाइल, सस्ती चीज़ें, सस्ते कैमरे, सस्ते लैपटॉप, और ये सोच के लग्जरी प्रोवाइड करें, डॉलर को कंट्रोल करके। एग्जैक्टली, ये लग्जरी थी और ये और कुछ भी नहीं था। और अगर आप वो कंट्रोल करके आप कह रहे होते कि यार मैं इंडस्ट्रियलाइज कर रहा हूँ, आपको ये बात भी पता थी कि CPEC फेज़ 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो होना है आपका, क्या कहते हैं उसे, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़ 2 में तो आपको अगर सस्ती मशीनरी, जो लॉजिक दी जाती है ना कि सस्ती मशीनरी के लिए डॉलर कंट्रोल किया था, तो वो मशीनरी तो आनी फेज़ 2 में थी। अच्छा, फेज़ 1 में तो आपका सारा का सारा जो है वो एनर्जी और उसके प्लांट्स लगने थे और आपकी रोडें बननी थी। मशीनरी तो आपको जो है ना बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए थी फेज़ 2 के अंदर, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। और अब आपके पास, आप देख लें आपके साथ में अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि यू आर गोइंग टू द IMF सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट योर मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आर मेस्ड अप। देयर इज़ नो वे आउट फॉर यू, एंड द फैक्ट इज कि आपके पास आज IMF आ भी जाए ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिर्फ 6 महीने डिले होगा। मैं एग्जैक्टली ये कहने लगी थी कि यू आर अंडर सो मच डेट दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हाट अ ग्रेस पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स। सी एग्जैक्टली, दो ऑप्शन हैं। आप अगर IMF के पास डिप्लीट हो जाएगा, तो ओनली वे यू विल नॉट डिफॉल्ट ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स इज अगर आप मैसिव किस्म के रिफॉर्म्स लेकर आएँ, और वो रिफॉर्म्स इतने ज़्यादा डैमेजिंग होंगे कि आपके लोगों की चीखें निकल आएंगी। मैं लिटरली आपको कह रहा हूँ। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास औकात ही नहीं है, आप ख़रीदारी कर ही नहीं सकते। आपकी एक सर्टन अमाउंट है जो कि आप ख़रीद सकते हैं। डॉलर बेस में सोचें, कॉम को आप रुपी से हटाएं और सिर्फ डॉलर में लेकर आएँ। ठीक है, आपको 25 अरब, पिछले दिनों एक डेप्यूटी गवर्नर का बड़ा अच्छा, स्टेट बैंक के गवर्नर का बड़ा अच्छा आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने बहुत डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि पाकिस्तान को अगले 5 साल हर साल $25 बिलियन रिटर्न करना है कर्जों की मदद। हर साल $25 बिलियन रिटर्न करना है। ठीक है, वो $25 बिलियन जो आपने रिटर्न करना है वो आप किस बेसिस पे करेंगे? आपका तो करंट अकाउंट डिफिसिट 20 अरब होता है। तो 20 अरब तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पूरा करने के लिए आपको कर्जे चाहिए, लेकिन आपको तो कर्जे वापस करने के लिए 25 अरब चाहिए जो कि एक्स्ट्रा है। तो वो किस तरह से होगा? अच्छा, उसके बाद फिर आपका जो है ना, आपकी जो गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट आप 9,000 अरब का आपका बजट होता है जो कि आपका कॉस्ट है ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट। 6,000 अरब रुपया आप अपने टैक्सेस से कलेक्ट करते हैं। आज तक कौम टैक्स नहीं देना चाहती। आप एग्री के ऊपर टैक्स लगाते हो, कौम कहती है जी खाना महंगा हो जाएगा। आपका जो भी ये प्रॉब्लम है। It's a huge paradox in itself. It's a paradox. Yeah. आप जिस वक्त बिजली एग्री के ऊपर टैक्स लगाते हो, एग्री वाला आपको आके ब्लैकमेल करता है, कहता है जी खाना अनाज महंगा हो जाएगा। कौम कहती है देखो ज़रा ये गवर्नमेंट अनाज महंगा कर रही है। जिस वक्त आपके जो है ना गैस के ऊपर सब्सिडी हटती है, सब्सिडी क्या है? आप क्यों दे रहे हो यार सब्सिडी? आपके पास नहीं है, आप कर्जे ले लेके सब्सिडी दे रहे हो। आप नहीं कर सकते ये चीज़। तो आपकी वो सब्सिडीज हटने की बात होती है। अब इसके ऊपर वो लोग आके ये बात बोलेंगे कि देखें जी आप एक एलिटिस्ट हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं। ओ भाई, कोई एलिट ही रह जाएगा इस मुल्क में जब आप डिफॉल्ट करोगे। यू नो, you can't run your house like that. You have to have a sustainable way to run it. Do something. Either cut the size of the government. You do not need tens of different ministries and then tens of thousands of government people और उनको doing पैसा, absolutely nothing. like You do not need PIA doing. आपको पता है लास्ट ईयर PIA ने 90 बिलियन रुपीस का लॉस किया है। 90 बिलियन रुपीस का लॉस किया है। God, 90 billion alone PIA? For what reason? Why is people's tax money? People's tax money मैं बोल देता हूँ, my tax money नहीं बोलता। Why is people's tax money going to subsidize a white elephant जिसकी कोई लॉजिक नहीं है? आप उसको बंद भी कर दो ना, ठीक है, आपका कोई नुकसान नहीं है।
लोग आगे मिसालें देते, देखे कतर के पास है, देखे यूएई के पास है। ओ भाई वो लोग ऑयल इकोनॉमी है, छोटी छोटी उनकी पॉपुलेशंस हैं, उनके अपने जहाज नहीं होंगे तो पूरी दुनिया से उनके पास कोई आएगा नहीं, ये उनकी लॉजिक थी। यू आर एट द क्रॉस रोड्स, यू डोंट नीड दैट। आपके प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज 4 जहाज की एयरलाइंस चल रही हैं, यू डोंट नीड PIA। With or without PIA, irrespective, it's going to run. Every route that PIA is going to, there is another airline going there as well. Yeah. So आप उसको बंद करें, use that money somewhere else. Use that money somewhere else. Use that money somewhere else. Stop losing that money. 90 billion you're taking out of loans. You're taking loans. Yeah, true. Yeah. To what end? Yeah. Right? So the government needs to be cut. And these are radical reforms. Like आप कह रहे हैं कि यार 1/3 the size of the government needs to cut off. You need to privatize a lot of these PIA and steel mill. Steel mill 9 साल से बंद पड़ी है, उनके एम्प्लॉयज को तनख्वाहें जा रही हैं। What? हाँ जी, क्यों? उसको प्राइवेटाइज करें, मुल्क में स्टील तो बनना शुरू हो यार। You are paying money for zero productivity. Oh, that's a recipe for disaster. Yeah. That is like basics of economics not making sense anymore. So anyway, I mean, I can talk a lot about a lot of these things, and we're going to do a lot of podcasts to understand more of these things. A lot of this that I'm saying has been from podcasts as well. Achha, khair. So, but the summary for this is that this is अब हुआ ये है कि हम इस बार हम गए और हमने जाके हमेशा की तरह हम अमेरिकन के पास गए और हम सऊदीज़ के पास गए और हम UAE गए और हम चाइना गए और हमें किसी ने बेल आउट नहीं किया। इवन सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, you know, our chief of army staff was there, and then a week later Saudi finance minister went to World Economic Forum and he publicly stated that we are not going to give free handouts anymore. We're going to now give loans or aid in कि इस कंडीशन के साथ कि आप अपनी इकोनॉमीज रिफॉर्म करेंगे। एंड सो दैट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज कि we're done with जो आप लोगों की बैड हैबिट्स हैं उनको हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते मजीद। सो we're now at a time where Pakistan, whether it likes it or not, whether the public wants it or not, whether the politician wants it or not, आप इसको जिस तरह से प्ले कर लें, Pakistan needs to reform. Yeah. One way or the other. And reform is painful. Yeah. For everyone. Absolutely. From top to bottom. इसमें कोई लोग कह रहे हैं ना कि ओ यार अमीर आदमी तो निकल जाएगा, वो ये सर सब मार खाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ सब मार खाएंगे। Obviously different levels की मार खाएंगे। Different levels की बात है, but सब लोग मार खाएंगे। और पूरी कौम, और अगेन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जाएं और जाके पढ़ें इंडिया के साथ क्या हुआ, इंडोनेशिया के साथ क्या हुआ, तुर्की के साथ क्या हुआ जब उनके रिफॉर्म्स आए और उनकी ये मोमेंट्स आए। ये बहुत ट्रबलिंग टाइम है। शॉर्ट टर्म आउटलुक इज़ वेरी वेरी ट्रबलिंग फॉर पाकिस्तान एंड इट्स अ स्केरी थिंग, बट दिस इज़ व्हाट गिव्स मी द मोस्ट होप एज वेल, बिकॉज विदाउट दिस मोमेंट we can never actualize the dream of Pakistan that we want to achieve, right? Without the pinch that we're about to experience. हाँ, वो एक soft landing हो सकती थी, वो एक बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था. That is politics, sure. I don't want to comment on that. नहीं हुआ, जो भी है. But the fact is कि अब वो like it or not, वो reforms आने ही आने. अच्छा, what should the average person do in this case? Like, how are people supposed to not just help themselves but help this situation for the country? Like just I would say कि maybe जो लोग जिनके पास वो कैपेसिटी है, वो प्रिविलेज है, वो पैसा है, वो रिसोर्सेज हैं, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में नहीं है, जिसके पास पैसा प्रिविलेज नहीं है. मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. नेशंस की, आप चाइना जाए ना, चाइना 90s के बाद पूरी कौम एक्सपोर्ट कर रही थी. इट वॉज नॉट अबाउट के यार चाइना ने वेरी रिसेंटली कोविड के टाइम के ऊपर अपना पूरा इकोनॉमी का रुख चेंज किया और उन्होंने अपनी लोकल कंजम्पशन बढ़ाई, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि एक्सपोर्ट से आपकी जो है ना वो अब हमारी इकोनॉमी जिस तरह ग्रो कर रही थी वो नहीं ग्रो कर पाएगी. तो हमें अपने लोकल लोगों को लोकल कंजम्पशन बढ़ानी है ताकि इकोनॉमी का पहिया चलता रहे. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट प्रिविलेज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आने वाले वक्त में एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी नीड्स टू रीअलाइन देमसेल्व्स टुवर्ड्स एक्सपोर्ट. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? I don't expect that every person is an exporter. Yeah. What I expect is that every person is connected to an industry that is exporting. Yeah, makes sense. Right? So कड़ी होती है. इंडस्ट्री हमेशा एक बहुत बड़े वेब की तरह चलती है. आज हमारा पूरा का पूरा वेब जो है ना वो इम्पोर्ट पे कनेक्टेड है. Yeah. वो आज साफ सी बात है, एक एवरेज बच्चा है, वो बैठ के इधर उर्दू बाजार से माल खरीदता है, जाके उसको बना के बेच देता है. वो कहता है यार मैं तो इम्पोर्ट नहीं करता, मैं तो इम्पोर्टर नहीं हूँ.
लेकिन उसके पीछे जो माल आ रहा है वो सारा इम्पोर्टेड है ना. या सो वो भी इम्पोर्ट से ही कनेक्टेड है एट द एंड ऑफ द डे. What people need to begin to do is they need to globalize themselves. They need to understand where the world is going. They need to become a player in the global picture. In the global picture, in the global marketplace. Yeah, because आपने अपने आप को पाकिस्तान को बाहर निकालना है ताकि लोग. क्योंकि इसमें मैं पिछले दिनों पढ़ा था ना, लोगों ने बोला हुआ था, एक बंदे ने बोला हुआ है कि यार आप जो है वो अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश करें, आप 2 नौकरियां कर लें, 3 नौकरियां कर लें. ठीक है, ये एक सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन देखें बात ये है कि जब आपके डॉलर कम है ना, ठीक है, तो आप PKR जितना भी आपके पास हो जाएगा ना, आखिर में एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. छोड़ दें कितने की हैं क्या है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और एक सर्टन अमाउंट ऑफ बायर अवेलेबल है. ठीक है, सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन हो सकती है. अगर एक बंदा 2 लाख की जगह 5 लाख रुपया कमा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसने कहीं और से मारा है, क्योंकि PKR आखिर में डिस्ट्रीब्यूट पूरी सोसाइटी में होना है. तो अगर आप पाकिस्तान से बैठ के अगर 7 लाख रुपए डॉलर की जगह 7 लाख रुपए कमाना शुरू हो जाएं, तो किसी और के हक का पैसा मारा जा रहा है, तो आप उस पॉइंट पे लाइन में आगे आ गई हैं कि वो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स अब आप बेसिकली there's this only a certain amount of money that is rotating in the society. वो इंक्रीज नहीं होगा just because आपने अपनी वो इंक्रीज कर ली. हाँ, सिर्फ और सिर्फ देखिए लाइन में ना, अगर 10-100 प्रोडक्ट्स है ना, अगर WOT 100 है और 1000 लोग खरीदार है ना, तो आप उसमें पैसे पे जिस तरह भी खेलते हैं, तुम्हारे पास 50 रुपए आ गए, तुम्हारे पास 1000 रुपए आ गए, आखिर में 50 लोगों को WOT मिलनी है. ठीक है, तो बिकॉज इतनी है. तो अब आप सिर्फ जो आप लोकल की गेम खेल रहे हो, ये खेल रहे हो कि जो 50 लोगों की लाइन है, उनमें से इन 1000 में कौन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके उस लाइन में खड़ा हो जाता है. अगर आपने एक्चुअल में कौम की तकदीर बदलनी है, आपने हालात बदलने हैं, तो आपने उस 50 के नंबर को चेंज करना है. उस 50 के नंबर को 500 पे लेकर जाना है. उसको करने का वाहिद हल ये है कि आपने डॉलर बेस पे जाना है. ये बेसिक असूल है. सो दिस इज लाइक IT इंडस्ट्री एंड फ्रीलांसर्स और ये वाली जो एब्सोल्युटली एनीथिंग एवरीथिंग फ्रीलांसर सर्विसेज में Amazon में जो काम कर रहा है बेहतरीन है. वो $200 कमा रहे हैं, वो बेहतरीन है. वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ही इज डूइंग मोर फॉर द नेशन देन एनीवन एल्स जो कि लोकल इंडस्ट्री में बैठा काम कर रहा है. बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग दैट कंट्री इनटू दैट मनी इनटू द कंट्री, और वो किसी ना किसी तरीके से इट इज गोइंग टू रोटेट इन द. मैं आपको अगेन छोटी सी मिसाल ये दे रहा हूं कि वो बंदा क्या कर रहा है कि वो 4 WOTयां महीने के आखिर में मुल्क के अंदर लेकर आ रहा है. वो ये नहीं कह रहा कि एग्जिस्टिंग WOT पे मैं अब हक अपना बढ़ा रहा हूँ. सो ही इज डूइंग अ सर्विस. वो घर से बाहर जो है वो रात को आते हुए WOT लेकर आ रहा है, वो घर की WOT के ऊपर बारियां नहीं लगा रहा है. So we need actually people to make money from outside of this country in any way. इसकी मैं आपको ना बड़ी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ लोगों को समझाने के लिए. एक घर है, ठीक है, अब उस घर के अंदर ना जो घर वाले हैं सारे के सारे, वो सुबह से शाम तक ना कोई जो है वो सोफे ठीक करता रहता है, कोई कपड़े धोता रहता है, कोई जो है जी वो डस्टिंग करता रहता है, और दिन के आखिर में खाने को कुछ नहीं होता. तो सारे रोते रहते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम बेचारे इतने गरीब हैं, लेकिन हमें जो ना क्यों नहीं हमें खाना मिल रहा. घर का सरबराह यूँ बैठा रहता है, यूँ पूरा दिन देखता रहता है सबके सब मेहनत कर रहे हैं, और वो कहता है कि हमें खाने को क्यों कुछ नहीं मिल रहा, क्या सीन है. अच्छा, वो पहले 4-5-6 महीने तो अपने चाचे से कर्जा लेता है, वो मामे से कर्जा लेता है, और वो ला के ना चीज़ें ला के देता रहता है, और वो जो डस्टिंग कर रहा है और जो वो कर रहा है वो सब खुश रहते हैं, कहते हैं देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे WOT मिल रही. 5-6 महीने बाद सब कहते हैं यार तुम इतने कर्जा हो गया तुम्हारे पास, अब तुम हमें पैसे वापस करो. ठीक है, अब अगर तो वो सारे डस्टिंग करते रहेंगे ना, ठीक है, तो उनके घर में होगा कुछ नहीं. वो कुछ भी कर ले, वो अपने डस्टिंग के घंटे डबल भी कर ले ना, वो सुबह की भी ड्यूटी लगा ले और रात की भी डस्टिंग की ड्यूटी लगा ले, तो वो 4 नौकरियां कर ले. वो दिन में 4 डिफरेंट नौकरियों में डस्टिंग करें. ठीक है, ओ भाई घर में WOT कोई लेकर नहीं आ रहा तो खाना कहाँ से खाएंगे. कौम को घर से बाहर निकलना है और जाके जाके नौकरियां करनी है ताकि रात को WOT आए, लेकर आए. हाँ, ठीक है, आप लोकल में बैठ के कपड़े धो लें, डस्टिंग कर लें, जो भी कर लें. Excellent analogy, very easy to understand for anyone. Yeah. So we need to get out of Pakistan. We need to go and understand what's happening outside of Pakistan. We need to understand the industries. We need to understand the growth कहाँ पर हो रही है. We need to understand the way that these people talk, what they're interested in, how they think. Learn from them. Yeah, like you would say, like people would say कि ये यहाँ का brain drain हो रहा है. In fact, आप जाएं और उनका ब्रेन ड्रेन करें. एग्जैक्टली. और इसमें सिर्फ बाहर के लोग नहीं, बाहर के पाकिस्तानी बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनसे समझें, उनसे सीखें कि हो क्या रहा है, किस तरह आ रहा है. मैं ये कहता हूँ कि यार लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जाएं, अच्छी बात है, ये टाइम है पाकिस्तान छोड़ के जाएं. वो भेजेंगे रेमिटेंस, 30 अरब की रेमिटेंस आपकी 50 अरब पे जाएगी, अच्छी बात है, भेजें वो रेमिटेंस. ऐसे भेजें. जो रह गए हैं यहाँ पे वो भी सीखें, समझें. ये जो ब्रेन ड्रेन है, आई डोंट एग्री विद इट.
You have a huge population that is studying right now that is jobless. Yeah. ठीक है? Yeah. They require opportunities. Yeah. So anyone who can go out anywhere from an IT services professional and a doctor earning a lot of money to a taxi driver. Yeah. Make the dollars. हाँ, 25,000 रुपए की नौकरी यहाँ पे ड्राइवरी से बेहतर के वहाँ जाके आप जाके 10-12 हज़ार दिरहम कमाएं और 10-12 हज़ार रियाल कमाएं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक तो वो डॉलर्स कमाएं, ठीक है, वो लेकर आएँ. दूसरा ये कि बाहर की इकोनॉमीज़ को समझें, ये फिगर आउट करें कि ग्लोबल सप्लाई चेन में आप क्या पार्टिसिपेट करते हैं. मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा कि आप जी बड़ी इंडस्ट्री लगा लें, आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें. यार बेसिक, मैंने आज खबर पढ़ी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है, उन्होंने $10 मिलियन का 20 मेगावाट का सोलर का एक कॉन्ट्रैक्ट उठाया सऊदीया के अंदर. सऊदीया में $900 अरब लगना है अगले 7 साल के अंदर, 2030 तक. सऊदीया इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड बाय 2030. People in Pakistan have no idea. इग्नोर कर रहे हैं. इग्नोर कर रहे हैं. जबकि वो आपके लिए राइप है टू कम एंड रीप. Yes. Right? There is going to be an exodus. There is a huge Pakistani diaspora over there. You just have to go and start building the network and the connections. Yeah. आपको पता है कि Europe and Americas and Japan have an aging population. Over the next couple of decades, they're going to have a lot of retired people and not a lot of productive people. Yeah. They will require need young people. Yeah. You need to be training that talent that they can go there. Yeah. So यहाँ पर इस तरह like लोगों की mentality इस तरह होती है ना कि तुम वहाँ पे जाकर क्यों अपना टैलेंट और सर्विस दे रहे हो. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देना है, निकलो सर्विस दो, उसके एवज पैसे लो. बिकॉज हमारे मुल्क को इस वक्त किसी की सर्विस की जरूरत नहीं है. जो आप कह रहे हैं, हमारे मुल्क को हमें पैसों की जरूरत है कि जिससे हम ग्राउंड अप बिल्ड करें एंड इवेंचुअली सो पीपल आई थिंक हु हैव एनी काइंड ऑफ स्किल, एनी काइंड ऑफ टैलेंट, प्रोवाइड दैट outside of this country and in turn get the money. Exactly. Yeah. And then तो एक तो ये एस्पेक्ट है. दूसरा ये है कि फिर आप जाएं और जाके देखें कॉन्ट्रैक्ट्स करें वहाँ से, जिसमें आपके इंडस्ट्री की भी काम होंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी. इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग, देखें ये बात बड़ी सिंपल सी है. इस सीज़न में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको लेकर आऊँ जो सीपैक अथॉरिटी के पुराने चेयरमैन थे. सीपैक कि जो फेज़ 1 है ना, वो अब मैच्योर होना शुरू होगा और इट्स गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ, जिसकी वजह से आपका एनर्जी मिक्स के मसले आते थे वगैरह वगैरह. एंड सिमिलरली जो फेज़ 2 स्टार्ट होना है, वो फेज़ 2 था ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का. सो वाइल वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो अपॉर्चुनिटी बढ़ना शुरू होगी कि हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो सर्जिकल गुड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स गुड्स हैं. तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, वो आइडेंटिफाई करें कि वहाँ पर आप क्या क्या किन एरियाज़ के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं. IT सर्विसेज तो इज़ अ ह्यूज थिंग. जाएँ जाके पूरी दुनिया जो है वो NFT तो Web3 तो ब्लॉकचेन तो AI तो I mean you name it. 5G आ रहा है. There is going to be an incredible opportunity that is going to be created. And it's not like you can't get into these industries. There's like so many courses and things you can do and learn and get in there. Exactly. Right? It's just we don't have the insight. यार बंदा रेडी बैठा हुआ है यहाँ पर. जब अमेज़ॉन बिका है और मैंने देखा है कि 1 मिलियन बंदा अमेज़ॉन पे जाने के लिए रेडी है ना, तो मैंने ये देखा है कि इस कौम को आपने सिर्फ और सिर्फ राह दिखानी है और वो खुद से पहुँच जाएगी वहाँ तक. एंड सो अपॉर्चुनिटी इस वक्त एक्सप्लोड कर रही है, especially in the Middle East and Saudi. हाँ, right now because there is a recession in Europe, so in the short term Europe and Americas are a little slow. Middle East for most part is एक तो वो है थोड़ा सा ना because of the commodities वो protected है from the global recession. But more than that, they are also investing a lot of money, pumping it into their own economies because they want to grow and create certain stop their dependency on oil. Yeah. तो सऊदियों का विजन 2030 है. They're investing a lot of money. दुबई का विजन 2040 है जिसमें वो दुबई को रीडिजाइन कर रहे हैं. No, and like I know, like आपको इससे नजर आ जाता है ना कि all the like major tech conferences are now happening in the Middle East. Like they are getting out of like the oil mindset to a technology mindset, and like you can see. You can absolutely see. और सर मैं एक आपको बात बताऊँ कि the future of the world is being created in the Middle East right now. People are not seeing it. But there is for Pakistanis, considering we have a cultural linkage with them, we have a huge diaspora there. We are very well structured to reap the rewards from those from Middle East. People aren't seeing it. अगर वो देख लें, it's an insane opportunity that is about to rise out of the Middle East. There is a changing world order. वैसे separately एक बड़ी अच्छी वीडियो है रे डालियो की on the changing world order. People should see that. But there is a changing world order. China is going to be the world's largest economy by 2026. The global center of economic gravity is
शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. मैंने आपको उस मैप में दिखाया था कि ईस्ट के अंदर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी था 35% ऑफ द GDP. और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट किया एंड इट इवेंचुअली कल्मिनेटेड ब्रिटिश एम्पायर से, फिर इवेंचुअली वो अमेरिका तक चला गया. और अब वो बहुत रैपिडली वापस आ रहा है हमारी तरफ और एशिया की तरफ. rise of the Asia of the east of the this side of the world. एंड सो आइदर ठीक है पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान में उसमें से सर्टन लोग बाहर भी चले जाएंगे, सर्टन लोग वो भी कर लेंगे, लेकिन अ वास्ट मेजॉरिटी हैज़ टू स्टे इन पाकिस्तान. Yeah, of course they have. दे नीड टू फिगर आउट ये इस तरह तो नहीं चल सकता. और ये जो मोमेंट होता है ना रिफॉर्म का, ये पेनफुल, सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. सबसे ज़्यादा पैसा इसमें बनाया जाता है क्योंकि आज जो बुनियादें डालेगा ना, जो इस एनवायरनमेंट में बुनियादें डालेगा, वो मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ अच्छे वक्तों में वो कल का मिलियनर है, वो tens of millions dollars वाली बात वाला है. Agreed, yeah. And so it's for those people to be able to identify the opportunity, get into the right time, जहाँ पर वो एशिया की स्टोरी लिखी जा रही है, जहाँ पर पूरा एशिया राइज करेगा. सऊदी अरब और ईरान दोस्ती कर रहे हैं, वो दोस्ती कर सकते हैं, तो हम को लगता है पाकिस्तान इंडिया दोस्ती नहीं कर सकता. सर वो भी होगा, आप आने वाले वक्त में देखेंगे. Like when stuff happens and you realize you need each other, you do it. You do it, यार. When Yeah. it's economics, when you know that you can take out millions of people out of poverty in both countries. Yeah, I think like ego खत्म Ego करे ना. खत्म हो जाएगी and you'll move on. I think we're now at a time where Maybe, Asia I is don't know. beginning to understand. Asia is definitely beginning to understand that. भाई देखें, अब वो वक्त नहीं है, अब मार पड़ेगी. अब और अगर अभी नहीं किया तो कब सर्दियों में करेंगे? हीट नहीं होगी और गर्मियों में कूलिंग नहीं होगी. ठीक है, तो जब ये नहीं होगा ना तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी, बोरिंग चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बोरिंग टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ेगा, जान मारनी पड़ेगी और पैसा बनाना पड़ेगा. Because we can't be like our older generations. Yeah. वैसे I think generally people in Pakistan they're lacking in investment mindset, and what I mean by that is कि हम लोग की I don't know हमारी शायद self esteem इतनी low है, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, और we've been fed the wrong information our entire life, where any kind of self growth, it has some kind of shame attached to it. So it's like it's considered wrong, it's considered arrogant, और आप किसी भी लेवल पे वो कर लें कि अपने लिए करना, बस हमेशा दूसरों के लिए करो. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि when you don't invest in yourself, whether in terms of knowledge, whether in terms of your lifestyle, whether in terms of any kind of growth, जिसमें आप कहते हो कि नहीं, there is the eventual growth नहीं होती. बात ये है कि the more you invest in yourself, the better of an asset you become to your country, your people, this world. Exactly. Like अल्लाह ने आपको भेजा इस दुनिया में अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, achieve your highest potential so you can serve. Absolutely. The fact is that people in this country don't do that. जहाँ पर उनको 2 रुपए अपनी थोड़ी सी growth में लगाने पड़ते हैं, and I'll take it down to like the most basic things of getting better education, getting better food, investing in their mental health, investing in their physical health. It's all considered these very small basic things which people actually deserve. They consider it that they don't deserve these things. Yeah. Right? So वो mindset change करना, and and the things that they will spend their money on. Yeah. They will spend their money on a lot of things, but they're not investments. Yeah. Like for example, like you could be buying a bunch of clothes. ठीक है, and I'm talking about people who have money. Yeah. Like they will buy a bunch of those clothes, but they will not invest in their growth. So that's spending and that's investment. There's a difference, right? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. हमारा spending mindset बहुत है. यार, investment mindset नहीं है. We had a guy who used to work for us. Minimum wage job, 25,000, 30,000. Very basic work, 2-3 hours a day. Office में जो था. हाँ. And he would. This one time he came to me and he was holding an iPhone. And so I asked him कि अच्छा वाह माशाल्लाह आपने ये कैसे लिया. उन्होंने कहा कि बस मैंने जो है ना वो कमेटी डाली और मैंने ये आईफोन ले लिया बिकॉज मैंने पता नहीं कोई गेम खेलनी थी. And he's not somebody who has money. Oh, he invested 2 months of his salary into a product to play games. अच्छा, the same guy I was after him कि यार तुम एडिटिंग सीख लो, तुम्हारी अर्निंग जो है वो बड़े आराम से डबल हो जाएगी, बैठे बैठे डबल हो जाएगी. ऑफिस में हर कोई एडिटिंग कर रहा है, तुमने 2 बंदा बैठा है, घंटा लगाने रोज का. हाँ. तुम आते ही हो. हाँ. ठीक है, he was FA pass, so he understood and he could use computer and whatnot. So it was very easy for him to do it. Didn't do it. This one day then he came to me and said मैंने Facebook अकाउंट मेरा जो है ना वो लॉक हो गया या पता नहीं वो मेरे से लूज़ हो गया, वो मुझे रिकवर करवाना है. मैंने कहा जी क्या हो गया. वो मैं PUBG पे मैंने लगाया हुआ है. तो मैंने कहा कि तो आप नया अकाउंट लगा लें. वो नहीं जी मैंने 18,000 रुपये की उसमें ना स्किन्स और ये चीज़ें ली हुई हैं. यार कैन यू इमेजिन. And that's where I was like I've been after you. I mean I didn't say it to him, but
आई वॉज आफ्टर हिम कि यार तुम कुछ लर्निंग करो, तुम ये देखो, मैंने उसको कोर्सेज निकाल के दिए, मैंने कहा बस तुमने इसको देखना है, इसको इस तरह से कर लेना है, डिडंट डू इट। वो मेंटालिटी नहीं थी। ही केप्ट ऑन कमिंग टू मी, सेड कि मैंने सुना है कि वो दिस राइड हेलिंग सर्विस के ऊपर जो है ना वो बस बैठने के बोनस मिल जाता है। Yeah, so that shows the mentality and mindset. The people are not just lazy, they are not willing to make themselves grow. Absolutely. और जब तक यहाँ पर लोग grow नहीं करेंगे, मुल्क कैसे grow करे? Like become an asset. Like you can't sit and just complain, right? Yeah. And that goes for everyone. जिस भी आप circumstance में जहाँ पर भी हो, whatever you can make out of your limited resources, whatever you have, make yourself useful. Absolutely. Work on making yourself a productive, useful member of the society, and one by one people start doing that, you see the economics change. Absolutely. And every society has had similar. China had an opium problem. China was hugely corrupt. Indonesia had a huge corruption. Yeah. I know. And political turmoil. These countries came out of it. Yeah. So we will come out of it as well. It's just that we need to have the right indicators. Now, connecting this with the current turmoil, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस पॉइंट पे आ गए। मेरी प्रोडिक्शन ये है कि अब आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि हमारे लोग लेजी थे, हमने सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बना दिए कि उस लेजीनेस को इंसेंटिवाइज किया, और हमने मजीद उसको ऐसे किया। कैसे किया लेजीनेस को इंसेंटिवाइज? यार आपने हर चीज़ को आपने सब्सिडाइज कर दिया। हाँ, उस तरह से। यस, ठीक है, आपने हर चीज़ को सब्सिडाइज कर दिया। आपने कहा यार ठीक है, तुम अगर नहीं हो, तुम अगर जो है ना थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा के तुम अपने घर में एक फ्रिज और फ्रीजर लगा दोगे तो तुम्हारी बिजली नॉर्मल रेट की हो जाएगी, तो तुम सस्ते में ही रहो। नहीं, सब्सिडी। एंड ऑल्सो पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल नेशंस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट। चैरिटी इज ग्रेट, वेरी एसेंशियल, बट इफ इट्स मेकिंग योर कंट्री लेजी, And it is doing that. It does do that in a lot of ways. Because आप करते क्या हो कि आप जो है ना जाके आप रेडी वाले से आप बार्गेन करते हो और आप चौराहे पे खड़े बंदे को 500 रुपए दे देते हो, and you feel great about yourself. But the fact is you're incentivizing the चौराहे पे खड़े वाला versus the रेडी वाला. Why should the रेडी वाला do the रेडी? Like आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे, आप कह रहे हो कि लेजी होगे तो पैसे मिलोगे, प्रोडक्टिव होगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। आखिर में you don't even realize how this actually creeps into the society, like it does. देखिए सोसाइटी में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मनी का ही सही तरीके से समझ नहीं है। पैसा सोसाइटी में घूमना है, अब आप उसको या तो इकोनॉमिक्स के थ्रू, प्राइवेट एंटरप्राइज के थ्रू घुमा दें, तो आप रेडी वाले को अच्छे पैसे दें, आप अपने काम वालों को अच्छे पैसे दें, आप उनको पैसे दे के आप सारा इसके ऊपर हमारी भी बड़ी डिस्कशन होती है, राइट? कि जिस तरह हमने जो है वो अपना द रेवेन्यू दैट वी हैड, हमने तनख्वाहें अपनी डिफाइन की और हमने बाकी सारा हमेशा सोचा कि यार बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करके लोगों को हायर करना है। We could have kept all of that money. Yeah. Right? And we wanted to create jobs. We wanted to create jobs. And alhamdulillah, the reason why I'm so passionate about it is because I have experienced this. You invest in people, you invest in productivity, you will grow beyond your wildest imaginations. Yeah, it's उस fear से ना सोचे ना। हाँ, वो छोटी सोच है कि यार मेरे पास 5 लाख रुपया आ रहा है, मैं 5 लाख रुपये अपनी जेब में रखूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं 5 लाख रुपये में से 2 लाख रुपए के 2 लोग हायर कर लूँ, यार 2 लाख रुपया मैं लगा रहा हूँ। बिकॉज दैट स्मॉल सोच, ये नहीं रियलाइज होता लोगों को उस 5 को 15 पे कैसे लेके जाना है भाई। yes, 5 को 15 पे लेके जाना है, और आपकी वजह से व्हेन यू लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट 5 टू योरसेल्फ, आप जब लोगों को देखते हो तो वो इकोनॉमी में वो फ्लो करता है, इट गोज, जॉब्स आर क्रिएटेड, पीपल मेक मनी, पीपल आर इंसेंटिवाइज, लोगों के लाइफस्टाइल्स बेहतर हो रहे हैं, जिंदगी बेहतर हो रही है, प्रोडक्टिविटी होती है, उनको खाना बेहतर हो रहा है। अच्छा, उनका खाना बेहतर हो रहा है तो वो घर के प्रोडक्टिव मेंबर्स बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर वेल नरिश्ड, दे ईटिंग बेटर। इट्स लाइक वो recently I read in this book that money is energy. Right? So the more you create it, the better your society is. Like एक money के साथ relationship को change करना बहुत ज़रूरी है, because as long as you continue to see money as this negative thing, जो हमारी by the way हमारी country का बहुत major problem है of having a very negative relationship with money, considering it a bad thing. It's so important to love money, because when you love money, you want to create it, you want to work for it, and it's an energy, right? अगर आपके पास 5 लाख हैं, 5 लाख की आप बात करें, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपने अपने पास रखी हुई है। आप उस एनर्जी को ना आप किसी और को दे सकते हो, वो फर्दर किसी और को बिल्कुल ऐसा ही है, और वो एक स्प्रेड होता है सोसाइटी में, एंड प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी एंड एवरीथिंग। लाइक आपको एक मजा बताऊं, इस्लाम के अंदर ना, इस्लाम के अंदर द लव फॉर मनी there is nothing wrong with that in Islam. Islam सिर्फ आपको एक बात कहते हैं, it's a really good thing. It's a really good thing. Islam सिर्फ ये कहता है होड़ ना करो। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। कमाओ खर्च करो, कमाओ खर्च करो, ताकि खर्च करने वाला अगला बंदा जो है वो आगे खर्च करे, जब इकोनॉमी मनी मूव करेगा तो वो करेगा। अब उसमें खर्च आप किस चीज़ के ऊपर कर रहे हो, ये इट्स अ वेरी बैड साइकिल। आपने चैरिटी की बात की ना, आप कहते हैं यार देखो बेचारे गरीब लोग इतने ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से जो है ना गुर्बत जो है वो है। यार द मोर मनी यू गिव टू द पीपल,
while they are not working, the less money there will be, the less bread there is available in the house. How? क्यों? So जब आपके घर में let's assume कि दो लड़के जो हैं वो बाहर जाके कमा कर आते हैं, डबल रोटी लेकर आते हैं हर दिन रात को, और 4 लड़के घर में बैठे हुए हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं पूरा दिन, ठीक है, और यू फील बैड फॉर द 4 लड़के जो घर बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड यू गिव ऑल ऑफ द फूड और मेजॉरिटी ऑफ द फूड, तो जो बाहर जा रहे हैं ना, दे आर लेस इंसेंटिवाइज्ड टू गो आउटसाइड, ठीक है, एंड सो देयर इज लेस ब्रेड बीइंग क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस. द ब्रेड दैट इज कमिंग इन, जिसको आप कह रहे हो राशन करके आप उनको उन लोगों को दे रहे हो, क्योंकि वो then they're not gonna make more. उनमें से एक और बंदा बैठ जाएगा उस तरह से, फिर वो एक ब्रेड रह जाएगी, वो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप अपने हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटी. So what do you do about the poverty? Because problem है कि लोग गरीब तो हैं, right? And like देना तो है. Absolutely. And in fact इस्लाम में ये भी है. मैं ये कहता हूँ कि आप टारगेटेड करें. मैं मैंने अपनी लाइफ में बड़ा सिंपल सा किया था. एंड ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ये रोड साइड चैरिटी. Yeah, I know. Used to do a lot of charity. Yeah. And what I changed was that I converted all of that charity towards TCF. Yeah. I converted all of that charity to do organizations, इदारे. Economy of scale के अंदर बड़ी पावर होती है, right? आप जाके जब हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अपने वो कर रहा होता है, उससे बेहतर है कि आप ऑप्टिमाइज करके किसी इदारे को दो. आप ऑप्टिमाइज करके टैक्सेस दो अपने पूरे. यार आपके मुल्क के अंदर आप टैक्सेस ही नहीं दे रहे. चैरिटी सबसे बेसिक बात है. आप टैक्सेस तो दो ना, स्टेट को मैनेज करने दो कि वो किस तरीके से लोगों को वो करती है. ठीक है, हमारी स्टेट अनऑप्टिमाइज्ड है, जो भी है, पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, फिर स्टेट से सवाल करें. एंड ऑल्सो आई फील लाइक एक और भी है ना कि मतलब जिन लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल इफ people have hired people, तो वो उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं देते हैं. हाँ. तो आप मतलब वो ये है कि आप the money is not being spent and invested in the right way. Like वो ये जो है कि आपके लिए जो काम कर रहा है उसको आप कम पैसे दोगे, लेकिन आप रमजान में तुन की चैरिटी करोगे. So that is that can make you feel really great about yourselves, but what is the impact, right? और आप and if this is completely religious, even then it's wrong. Absolutely. Religiously be it's wrong. Yeah. So क्योंकि religion tells you something very very different, and you need to understand the Islamic economic system. I'm going to do a podcast on that. And very interesting sort of side note, I was researching recently and I found out कि जो cryptocurrency के जो believers हैं, interestingly what they're recommending is a system that is Islamic finance. इसके बड़ी डिटेल में बात करेंगे, बट लोग डिस्कशन होती है ना कि क्रिप्टो करेंसी हलाल है हराम है. तो एक्चुअल में the way the monetary system that they are now proposing is actually the monetary system जो इस्लाम लेकर आया था. बट anyway, so point being कि लोगों को we need to move towards exports. We need to move towards we need to become a global player. We need to, in the changing world, we need to understand where the world is going. We need to project it. We need to understand it, and we need to realign ourselves so that a decade from now we are better positioned than we are today to reap. क्योंकि अभी जो ये 10 साल है ना, ये थोड़े से ट्रबल्ड होंगे और ये स्लो होंगे पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए. और अगेन साइकिल, सो ये बस साइकिल आया हुआ है. पिछला साइकिल था जिसमें सबने पैसा कमाया, हमने अनफॉर्चुनेटली नहीं कमाया, बट सबने कमाया था. अब साइकिल स्लो डाउन का आया हुआ है. तो उस स्लो डाउन के साइकिल के अंदर अगर हम रिफॉर्म्स ले लें, हम पिंच कर लें, थोड़ा सा पिंच हो जाएं, लेकिन हम अपनी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को फिक्स कर दें, तो जो नेक्स्ट टाइम बुल रन आएगा जिसको ये लोग कहते हैं, या ग्रोथ का पीरियड आएगा, उसमें वी विल बी बेटर पोजीशनड. एंड आई नो कि बड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, सो मैं नेक्स्ट उस पर चला जाता हूँ कि विच इज़ वाई वी आर नाउ टेकिंग सर्टन चेंजेस इन द पॉडकास्ट एज वेल. मेरा अपना इंटरेस्ट चेंज हुआ. मैं जब ये सारा का सारा मैंने स्टडी किया, तो पहला तो इफ़ यू रिमेंबर एक रिपोर्ट आई थी मेरे पास सऊदी अरब के बारे में, मॉर्गन स्टैनली की, जिसमें बड़ी 250 पेजेस की रिपोर्ट थी और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट थी. तो वो मैंने पूरी की पूरी स्टडी की और मुझे उसमें ये तो समझ आ गया, आई बिकेम अ बिलीवर के मिडल ईस्ट इज़ वेयर इट्स एट. रिसेंटली आई टुक अ ट्रिप टू दुबई एज वेल, एंड वहाँ पे जाके जो है मैंने काफ़ी सारी मुलाकातें भी की, लोगों से डिस्कशंस की, अंडरस्टैंड किया कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. एंड उससे मेरा मज़ीद पुख्ता हुआ ये ईमान कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ पार्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं खुद देखूँ तो मैंने सोचा मैं किस तरह अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकता हूँ. और जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा यार मुझे बस एक रिपोर्ट आ गई है, ना मुझे वहाँ पे कोई बंदे का पता है, ना मुझे पता है वो सोचते किस तरह हैं, ना मुझे पता है वो किन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, ना मुझे पता है कि सोच क्या है, ग्लोबल सोच क्या है, रीजनल सोच क्या है और ग्लोबल सोच क्या है.
मतलब अगर हमने ग्लोबल प्लेयर्स बनना है तो हमें वो सोच तो समझ नहीं होगी बिल्कुल। हाँ। तो जिसकी वजह से फिर मैंने वो ट्रिप लिया, जाके नेटवर्क किया, बड़ा डर भी लगा बिकॉज दुबई इज़ एक्सपेंसिव एंड हम तो गांव है ना एक छोटा सा, और गांव में तो हर कोई जिंदा रह लेता है, बट जब शहर आते हैं आप तो आपको समझ आ लगती है कि शहर में nobody cares, and so that's all of that is there, but I then made that decision कि I want to, because like I mentioned कि मेरे लिए podcast जो है is a learning experience. मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि मैं direction identify करता हूँ कि where do I want to go and where do I see myself over the next 10 years, and then फिर उसके around मैं देखता हूँ कि what are the areas that I would like to expand on, and then how can I learn about those areas. And so I'm proud to announce that we have registered a media company out of Dubai, and we are now a multinational podcast. Yeah, so you're expanding into the Middle East. We're expanding into the Middle East, and we are going to have so while this studio is here, and we're going to be having a lot of very interesting conversations in Pakistan, जिसमें हम इन्हीं एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और हम पाकिस्तान 2050 के पाकिस्तान को डिकन्स्ट्रक्ट करके होपफुली विद डिस्कोर्स बेटर रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो लोगों को एटलीस्ट लोगों को समझाना शुरू कर देंगे. जो मैंने पहले बात बोली कि पॉलिटिशियंस बाद में आते हैं, पहले हमारे लोगों को समझना है कि उन्होंने क्या डिमांड करना है फ्रॉम द पॉलिटिशियंस. बट उसी के साथ साथ आई वांटेड कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द कॉन्वर्सेशंस विल बी फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन. I will inshallah I do hope to speak to Pakistanis and non-Pakistanis alike. Yeah, so you want to bring that knowledge here. Absolutely. To these people. So I'm going on a journey on globalizing myself. I'm going on a journey on identifying कि how can I begin to अभी तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से होगा, और अभी तो मतलब it's expensive and I don't know कि उसकी cost accounting किस तरह से मैनेज होगी. But I'm on that journey on trying to peg my earnings on a dollar, right? कि मैं वो earnings वहाँ से बनाऊँ और मैं वहाँ से यहाँ लेकर आऊँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ से लेकर वहाँ पे जाऊँ. तो what are the ways to do it? What are all of the players? कौन से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि वहाँ पे रियल एस्टेट में हो गए या IT में हो गए या स्टार्टअप्स में हो गए, उन्होंने क्या क्या उनकी जर्नीज थी, उन्होंने किस तरह से अपने आप को बाहर लेकर गए वो. और फिर जो नॉन पाकिस्तानीज़ हैं जो बड़ी बड़ी डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए, कहाँ पे उनको चैलेंजेस चाहिए, उनकी सोच क्या है. एंड थ्रू दोज कॉन्वर्जेशंस आई होप कि जो ये एक ब्रिज मैं बना सकूँ, क्योंकि इन दीज चेंजिंग टाइम्स एज वी रिक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज. देखिए मेरा मानना जो है ना, और ये मेरी ऑडियंस से ही मैंने ये चीज़ सीखी है और समझी है कि आई थिंक at least a certain segment of my active listeners, I think I'm creating a listener base of leaders. I think these are the people who are the leaders of the future for this country and for this region. I think these are the people who are going to rise to the top. Okay. And so I wanted to identify what is the pathway that I can give them, right? Pakistan mein there's only enough that I can give them. You don't need more people dusting and cleaning in here. In here, exactly. You need more people going out and making the bread. Exactly. Yeah, and so I just thought कि मैं जो है वो वहाँ जाके करूँ. So inshallah, it's very anxiety inducing. It's scary, but it's very exciting. And we're going to be doing that. We're going to be having those conversations. थोड़ा सा ये है कि अंग्रेज़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बट ऑब्वियसली ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, तो वो तो होगा. A lot of the conversations for a lot of people they'll be like यार ये मैं एक सऊदी अरब के एक एग्री टेक के स्टार्टअप से के बारे में क्यों सुन रहा हूँ. But that's what people have to remember, right? This is important for you because for the region at large कि यार फूड क्राइसिस आने वाला है. उस फूड क्राइसिस के अंदर सऊदी अरब के अंदर हाइड्रोपोनिक्स से वो किस तरह पौधे उगा रहे हैं, या वो दुबई में किस तरह पौधे उगा रहे हैं, और अगर वो वहाँ से उगा सकते हैं तो हम पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, और पाकिस्तान में एग्री टेक के अंदर क्या काम हो सकता है, या हम यहाँ से फिर आने वाले वक्त में जब वहाँ पर फूड ग्रोइंग वहाँ चली जाएगी तो क्या हमारे लोग वहाँ जाके, क्योंकि उन जो प्लांट्स हैं उनमें भी तो फार्मर्स हैं ना, वो सिर्फ हाई टेक फार्मर्स हैं. तो आपके जो यहाँ से एरिड एग्रीकल्चर का सैकड़ों में बच्चा निकलता है फूड इंजीनियर्स का, जाना चाहिए, उसको दुबई जाना चाहिए. Yeah, because what's the point, right? वहाँ पर वैसे भी like the thing with the Middle East, Saudi, all these areas is that people जो Arabs themselves हैं, they don't really work. Yeah, of course. They're a very small population, right? So they're businessmen and investors and all of those things. और वो oil पे बहुत ज़्यादा depend करते हैं. They're very like jobs are not for us kind of people. Right. So they actually need, and especially when you talk about agriculture, deserts है, उन्होंने कभी किया ही नहीं है. So this will be a new thing for them to explore anyway. Exactly. And they need people who can do that. Absolutely. So like this is one opportunity you can say that we are talking about. And there could be hundreds of other ones. So that's going to happen. And it's going to be very, very different. It's going to be very, very exciting. And it's going to be a first.
ऑफ पाकिस्तानीज. मैं हमेशा सोचता था कि पाकिस्तान से मतलब दुनिया के लोगों को पाकिस्तान तो बुला लेते हैं. मैंने कैमरॉन मंटर का किया पॉडकास्ट, मैंने रॉबिन रफ़ेल का किया. अभी इसी सीज़न के अंदर 3 कॉन्वर्जेशंस जो हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर आ रही हैं, मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं इसमें. बट देन आई थॉट कि हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं कभी बाहर जाते मीडिया के अंदर. And so I'm very excited to go out there and introduce myself as I'm a podcaster from Pakistan, and I want to have this conversation and begin to understand That's what you're very doing. exciting, and I know it's not going to be easy. That's a personal thing that we, it's like you've built something so much here. Everything you do is here. All your money is here. You don't know how to अभी जाके पॉडकास्ट करना वहाँ पर इन दैट इकोनॉमी आप देखें तो फ्रॉम व्यूअर्स पर्सपेक्टिव हाँ एक पॉडकास्ट कर रहे हो बट वहाँ का खर्चा वहाँ का खर्चा देखे ना. यहाँ पर मेरे पास एक पूरी टीम है, मेरी टीम in rupees and spending there, मेरी टीम पूरा मेरा स्ट्रक्चर करती है, सारा सिस्टम सेटअप करती है. मेरी टीम जो है वो बैठती है और बैठ के जो है वो मतलब मेरे लिए बड़ा काम होता है. वहाँ पे मैं यहाँ पे एक अच्छे बड़े कंफर्टेबल घर में मैं रहता हूँ. वहाँ पर 1 बेडरूम का अपार्टमेंट का जो किराया है ना, आपको रोना आ जाता है. वहाँ पर जाके मुझे खुद जाके सारा सेट भी बनाना है, मुझे बिठाना भी है, मुझे ढूंढना भी है, मुझे उनसे and nobody's gonna give you money there. And nobody's gonna give you money there. Nobody's gonna give you money there. So it's going to be for a podcast. They'll be like, हम क्यों दें? हाँ, and so it's an investment that's being done, hoping के in 2 ways. First of all के ज़ाहिर है like you mentioned कि हर इंसान को अपने आप को फिगर आउट करना है, एंड बाय प्रॉक्सी आप मुल्क की तो सेवा कर ही लेंगे. तो मैं किस तरीके से अपनी जो इनकम है उसको इवेंचुअली डॉलर पे पैक कर सकता हूँ. एंड देन सेकेंडली, because the beauty of this is that whatever I am learning, you're teaching, I am sharing with the other audience, right? So we're going on a journey to make dollars, and everybody like hop along. Let's learn. So let's so see. Cute and so exciting. I'm excited for you. Thank you. I hope it works out. I hope this कोई बहुत ही रैंडम ना हो कि लोग क्लिप निकाल के डाल रहे हो आपके तो बड़े ख्वाब थे, ये क्या हो गया. बट that's the dream, and let's see how it evolves. So good luck with this season, good luck with expanding, good luck with going global, and we'll be on the sides rooting for you. Thank you so much. And anything else? That's it, I guess. बस हमला की अपनी भी एक पॉडकास्ट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. इट्स फॉर फीमेल बाय द फीमेल अबाउट द फीमेल्स. Thanks for the shout out. You can check that out. It's called Happy Chirp. For the women, For the women. It's so ये है. बाकी ये कि I mean obviously I'd like to thank all of the viewers who've been with us, जो जुड़े रहे हैं हमारे साथ पिछले 300 एपिसोड्स से. And I would just hope कि हम एक जर्नी पे जा रहे हैं, थोड़ी सी एवोल्यूशन आएगी कंटेंट के अंदर, स्टाइल के अंदर. आई जस्ट होप दैट यू स्टिक विद अस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ टफ टाइम, बट आई थिंक वी कैन ऑल कम आउट ऑफ इट टुगेदर. आई वुड वेट फॉर योर फीडबैक एंड योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच. वी आर गोइंग टू बी 2-3 चीज़ें हाँ मैं आपको बताना चाह रहा था और व्यूअर्स को बताना चाह रहा था कि जो कि इस सीज़न में होंगी. थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर करना चाह रहा हूँ अपने कंटेंट को. तो एक तो ये कि मैं पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि क्योंकि अब जब मैंने इतने सारे लोगों से बात करना शुरू कर दी है और इतनी सारी इंसाइट आ गई है कि पॉडकास्ट में एक सर्टन वो होता है. बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है, आपके व्यूज़ क्या हैं, आपकी एनालिसिस क्या है इन लोगों से बात करके. तो उसके लिए 2 चीज़ें मैं करूँगा. पहला तो ये कि आई एम स्टार्टिंग अ ब्लॉग जो कि जिसमें हर एपिसोड पे जो मेरी लर्निंग्स हैं कि क्यों मैं ये कॉन्वर्जेसन की और उससे मैंने क्या सीखा, आई वुड लाइक टू शेयर दैट, ताकि एक एडिशनल रिसोर्स, क्योंकि पॉडकास्ट में तो मैं लोगों की सवाल कर रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ, बट उसमें मेरे थॉट्स जो हैं वो उस पर आ जाएंगे. एंड देन आई एम स्टार्टिंग अ कम्युनिटी जो कि एक बहुत एक्सक्लूसिव होगी. लाइक आई मैंशन के वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ लीडर्स. तो उस पर ज़्यादा फोकस्ड होके, डेडिकेटेड होके, बहुत थोड़े सेट ऑफ पीपल हु एक्चुअली एंड अप कमिंग इन टू इट. We will actually sit down, figure out, we'll do live sessions, we'll do a lot of those things. I'll interact with all of the community members and we'll figure out what all can we do to maneuver through these times and grow ourselves in any which way. So these are 2 very, very exciting things that are going to be coming up. I wanted to ask you, elections आएंगे ना? हाँ जी. So how are you going to, is there anything that we're going to see on the podcast for that?
Yeah, I mean, so I would definitely be talking to a lot of politicians. Yeah, like I think like bring the politicians and let them talk so people can know, right? हाँ, so I mean, जो again Hafiz Naeem podcast was a big learning for me, and so I am very open now in having these conversations. I just hope, because these are powerful people and थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता कि उनको conversation को आप उस तरह से मैन्यूवर थ्रू कर सकें जिस तरह से मैं आइडियली करना चाहता हूँ. एंड बिकॉज ये इतने पोलराइज्ड होते हैं कि इसके ऊपर ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा आती हैं और वो दरमियान में थोड़ा सा खप हो जाती है. नहीं, आई थिंक वो भी पोलराइज्ड होते हैं और लोग भी पोलराइज्ड होते हैं. सो मेरा उसमें काम ये होगा कि मैं मेरी कोशिश पूरी ये होगी कि मैं पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करूँ, मैं उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करूँ, और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं उनकी बातें सुनूँ. वो बातें सही हैं, वो गलत हैं. आपको ये कोशिश भी करनी चाहिए कि अपना बायस ना लेके आए. और अपना बायस, हाँ, डेफिनेट. तो इसमें मैं एक लास्ट शाउट आउट देना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो. आपकी पॉडकास्ट है, आप I would love to have people like SN Iqbal. I would love to have people like Shahid Khaqan Abbasi. I would love to have someone from the People's Party come and have that conversation. I don't bite. मेरा एक स्टाइल जो है वो मतलब इनवाइट है, ओपन इनवाइट है. It's an open invite. कि वो basically I've been reaching out to people from these two parties. Unfortunately, I haven't been able to hear back from them. And so if you are someone from that party, or if you know someone from that party, and you know, why do you want to have these people? Yeah, because these people at the end of the day, they're all stakeholders, right? It's मेरा important, काम है उनके ख्यालात सुनना. मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमने आज तक ख्यालात इन लोगों के सही तरह सुने ही नहीं हैं मीडिया के थ्रू. तो वो आके मुझे बताएं कि वो क्या सोच रखते हैं. उससे लोग एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं. वो देखिए, मैं अपने व्यूअर को ट्रस्ट करता हूँ. मैं अपने व्यूअर को ट्रस्ट करके ये समझता हूँ कि मेरा व्यूअर इतना समझदार है कि वो खुद अपना ओपिनियन बना सकता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू फाइट द केस फॉर द व्यूअर. आई एम गोइंग टू लिसन. आई विल बी क्रिटिकल in my questioning in an extremely respectful way, but I will accept whatever answer they give me. Why? Because then it's up to the viewer for कि वो उससे agree करता है या वो disagree. Because you are basically not out here trying to push any kind of agenda. I'm not an like investigative journalist. I am just a conversationist. Here to have conversations. जैसे कि मैं ड्राइंग रूम में किसी के साथ बैठूंगा तो मैं बैठ के उससे लड़ाइयाँ नहीं शुरू कर दूंगा. मैं तमीज़ से करूँगा. मेरी डिस्क्रीमेंट्स भी होंगी तो मैं तमीज़ से करूँगा. मैं किसी के डिनर पे गया हूँ, उसका भी कोई दोस्त आया, मैं लड़ना शुरू हो जाऊँ, अजीब लगता है ना. तो ये है. बट या, आई थिंक वी आर एट द 2-hour mark. Yes, we are. Thank you so much for coming on Thought Behind Things. Thank you for having me. Ghost. You are a ghost, by the way. That's the right word. Guest and host, okay? That is true. God gave me this great word. Yeah, thank you for coming, and I don't know, why don't you do your ending note yourself? So thank you so much for watching. अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों से हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. बल्कि लाइक का प्लीज़ बटन दबाएं ताकि एंगेजमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों से हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचे. सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, चाहे आप ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे हैं या यूट्यूब पे हैं, दोनों पे यही होगा. फेसबुक पे नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करेंगे, TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. इसके साथ साथ हम यहाँ पर कहीं पर ईजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे आ रहा होगा. इफ़ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi being hosted by Hamna Raza. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and we'll see you in the next one. Bye.